So welcome back. This is lecture 1 of SN7, which is Economics of Maintenance and Spares Management. और ये आपका आखिरी चैप्टर है OM का. ओके, OM का 7th चैप्टर है, which is Economics of Maintenance and Spares Management. The reasonably short chapter. And we are doing CMA Intermediate for June 2023 attempt. Okay. So before we start, सबसे पहले ये जो है ये चैप्टर हमारा इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स मैनेजमेंट. ओके, सो ये डील करता है मोस्टली आपका मेंटेनेंस के ऊपर. ठीक है, सो कोई भी जो कंपनी बड़ी कंपनी होती है, ओके, सो एनी बिग कंपनी, ओके, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ओके, इट नीड्स अ वेरी गुड मेंटेनेंस फंक्शन. सो मेंटेनेंस जो एक सेपरेट फंक्शन होता है उनका. जैसे आपका ये होता है जो योर परचेसिंग, प्रोडक्शन, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, R&D, लाइक दैट. मेंटेनेंस एक सेपरेट फंक्शन होता है, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेंटेनेंस, इफ इट डजंट हैपन प्रॉपरली, देन व्हाट हैपेंस इज आपका यानी काफी नुकसान हो सकता है. ओके, सो इट इज, क्योंकि इसमें जो मेन नुकसान होता है, ओके, ब्रेकडाउन से, व्हाट इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी. ओके, so in one day, if you are manufacturing 5,000 units and it is giving you a profit of 1 crore, okay, so if in one day, if you are manufacturing 5,000 units, okay, 5,000 units you are manufacturing, right, and the revenue for that is 1 crore, okay, and let's say that your profit is 40%. Okay, so 40 lakhs is your profit, will be your profit. Okay, so if there is a breakdown of machinery and your machinery could not, your factory could not operate for one whole day, that means you have lost 40 lakhs. Okay, so here now we are starting with chapter 7 today, okay, which is economics of maintenance and spares management. So in this regard, our maintenance, we're talking about maintenance, why maintenance is so important for manufacturing companies. Okay, so in maintenance, for one day of breakdown also they can lose huge amount of money. Okay, for example, if in a day they are manufacturing 5,000 units, revenue is 1 crore. Okay, let's say 40% is the profit. If there is something has happened, and for one full day if the factory doesn't function, what will happen? 40 lakhs has gone into the drain. Okay, so which is why manufacturing is maintenance is very, very important. Along with maintenance, you also speak of one more word called spares. Okay, this chapter is economics of maintenance and spares management. Okay, now, so what is spares? It is basically spare parts. Okay, for maintenance, you need to maintain some spare parts, isn't it? Say if your machine has broken down here, okay, and there is one part which you need to replace. Okay, if you do not have it with you, say you have to order, and if you have ordered and for that to come to your location, say 1 day is needed, that means what? This loss will become 80 lakhs, correct? It will double up for 1 more day. Okay, so that's why it's very important to maintain spares. Okay, so maintenance and spares, these two words go hand in hand. Okay, so the maintenance department needs to know which are the spares which are important. Now again, if let us say they maintain spares of 50 crores, they are keeping spares of 50 crores. Okay, or let me say that the need of spares is 50 crores. Okay, 50 crores is the
spares they require for one month, let us say. Okay, it's a huge operation. So 1 month they require 50 crores. Okay, but they are maintaining spares of 75 crores. But they are maintaining spares of 75 crores actually. Okay, right? So that means they are investing 25 crores more than necessary, correct? And this is a huge amount of capital, right? So it is very important to judge the right amount of spares which you should maintain, okay? Because it is very, very costly, right? यहाँ पे जैसे हमने देखा ये आपका मेंटेनेंस और स्पेयर्स, ये दो वर्ड्स की हम बात करते हैं. चैप्टर का नाम ही है आपका इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स यानी फाइनेंशियल्स बेसिकली ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स मैनेजमेंट. Okay, so in this chapter we are going to study some statistical formulae and all, okay, to determine what amount of spares do you require. Not just spares, maybe some other things also related to maintenance and spares. Okay, we're going to see some statistical formulae. So like in this problem, like here, they have maintained 75 crores, but requirement was 50 crores. Okay, so statistically you will determine how much is required. For that, you will have to maintain record, detailed record. Okay, record wise, you will come to know, say for year 1, 2, 3, 4. Okay, so for each spare wise, you will keep record, spare 1, spare 2, whatever. Okay, so you will come to know that what is the breakdown pattern of this particular spare or some machinery. Okay, what is the breakdown pattern, right? So based on that, you can maintain your spares. See, if normally, if we say, when we talk about a percentage, we say that breakdown percentage, okay, let us say for 100 machinery, 100 machines, breakdown percentage I am saying is 10%. Okay, so that doesn't mean that each of these machines, each of these 100 machines, okay, if I am talking about a 100-day period, 100-day period, each of these machines, okay, let's say it for 90 days it will function, or for 100 days it will function, and for 10 days okay, for 10 days it will not function. Okay, for 100 days it will function and 10 days it will not function. Okay, so this will not happen for each of these machines. Okay, there can be some machines, some of the machines, it will not break down for the entire 100 days. There can be some machines which will follow 20% breakdown rate. Okay, but when you take the average of 100 machines, okay, you will see that the average figure as observed, it mostly remains constant. Okay, especially when you have got this data for a detailed observation. So you have got, say, observation of 5 years, or and a lot of data is there. Okay, so what happens is the data averages itself out. So basically, for 100 machines, if you see, your breakdown will always be close to this. It can be 9%, 11%. That's it. Okay, it will not be 20%, right? So which is why this data, maintenance of data is very, very important. So on the basis of data maintained, okay, on the basis of data maintained, we calculate the statistics, okay, the economics of it, okay, which is the statistical part that is calculated based on data which is maintained. So needless to say that the data must be very accurate. Okay, so now we'll just go ahead and see what this chapter says. Okay, it is mostly a statistical based chapter, right? So there are lots of numericals in it. So I'll give you some logics of the numericals, so you will be able to understand what it is, because as I said, it is statistical based. So it's hard to perceive using our
normal mathematics. Okay, right. So then first thing is breakdown maintenance. Okay, so maintenance is what? It is always done after a machine breaks down, correct? So after breakdown, what do? We will see what is the defect, okay? And then you will try to repair it, either get a new spare or just repair it sometimes, okay? Right? So for example, if your bike gets punctured, right? Either you will mend the puncture or you will change the tube altogether, okay? So machine cannot be used during the repair period. We saw that you lose production hours and you lose, eventually you use profit, correct? Right? So it is not a recommended practice. Okay. So here, this what they are talking about is breakdown maintenance. Okay. So what they are doing is they are doing maintenance only after it breaks down here. Okay. Right. For example, let us talk about your bike. Okay. Right. You are not doing servicing, just you are using it, and one day it breaks down. When it breaks down, you have taken it to the mechanic. Then he has done all repair, whatever he has done, he's got it ready. Then you start using it again. Okay. Then again you follow the same pattern. Then you don't go like in between, you do not give your bike for servicing. You just use it till it breaks down. Okay. So that is called as breakdown maintenance. Right. For certain things, it is good. One small example I can give you, your bike tire, right? Your bike tire or tube, let us say. Nowadays, lots of tubeless tires have come. Okay. So your tire and tube is something, do you get it separately checked every 6 months or anything? No, right? We just use it till there is a puncture, right? And once there is a puncture, then you do what you have to do, either replace your tube, okay, or repair the puncture, है ना? हमारी गाड़ियों में हम यही करते हैं कि आपका जो ट्यूब टायर है उसको हम कभी टेस्ट ही नहीं करते, राइट? हम बाकी सब चीजें टेस्ट करते हैं, लेकिन ये ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट में चलता है. ओके, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस. यूज इट एंड व्हेन इट ब्रेक्स डाउन, दैट टाइम ओनली यू हैव टू रिपेयर. ओके, राइट? बट व्हेन कैन यू यूज this funda? You can use only when the breakdown is not very costly. Okay, if the breakdown is very costly, then you will have to take it to the mechanic, give it for servicing every 6 months. ओके, और आपको अगर आपका ऐसा है कि आप ऐसे जगह जा रहे हैं, मान लीजिए, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल दैट यू use your bike to travel to different cities. That's a regular feature. When you travel to another city, in between you do not have any mechanic or anything. Okay, you might have a routine that every year you change your tube. That's it. Every year change your tube. Okay, so I had one friend of mine who used to do this for his sister's vehicle. So not every year, some period, after some period, he used to just change it so that the reliability is increased. Okay, so this is called as maintenance. So this thing, okay, we will come back to this. That's called as preventive maintenance. Okay, that is the next topic we'll talk about. Right, you're servicing, you're going to give the bike for servicing. That is called as preventive maintenance. Okay, you are preventing a breakdown. ठीक है, तो ये चीज, दो चीज होता है. तो ये आप कब करेंगे? ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कब कर सकते हैं? जब आपका नुकसान नहीं, जैसे कुछ टूल्स है, ठीक है, टूल्स से आप यूज कीजिए, फिर एक दिन वो ब्रेक टूट जाएगा. ओके, one day you're using some tools, normal tools we use, once it breaks you throw it off. Okay, there is no need for giving it to for maintenance because it will be costlier. Otherwise you can buy this tool, let us say, for 100 rupees. If every month or every 6 months you give it for testing, you might have to give 50 rupees to that mechanic. Okay,
So once 50, so 50, 50, 50, you will have to give as many times you are giving for maintenance. Better for you is just use it. Once it breaks, you can throw it off. And because it is easily available, right, you can just buy it. There is no real challenge in your day-to-day work because it breaks. But what about the example which we took earlier, right? If there is a breakdown that is costing you 40 lakhs per day, would you want to take a chance on such an occasion? Answer is no, isn't it? Right? So that's why you can do breakdown maintenance sometimes, okay, where there is not much cost on it. Okay. That time you can go for breakdown maintenance. So for non-critical items, many people do breakdown maintenance. Okay. You can think of many things where if you think of it, you would know there are certain things which you use. It's like use and throw. You will never give it for repair or anything. You'll just use it and you will throw it. Okay. That is basically following the concept of breakdown maintenance. Right. It's not recommended practice, but many organizations do it. Okay. For the reasons we saw, there can be lost profit. And sometimes some machines, they do not want to keep some machines idle. Okay. So they just want to use it as much as it can. And when it breaks down, they have some spare or something which they can put and then run it. Okay. So which is why they want to continue that way. Okay. But this doesn't happen for critical items. Always remember. Okay. It's only for non-critical items. Okay. So this is a good way for maintaining non-critical items. Okay. For these items, your repair cost will be less this way. Use it, use it, use it. Breaks, throw it, get a new one. That is cheaper. Okay. And when it breaks, there is no real problem. Like there can be some machinery which are dangerous also, correct? If it breaks, then there can be deaths of some workers and all. There you would not want to go for breakdown maintenance, right? So now, so what is breakdown maintenance? So this thing can be asked as a 2-3 marks note. Okay, very, very simple. Breakdown maintenance is maintenance after machine breaks down. Okay, after it breaks down, you will procure spares or you will repair whatever is to be done. You will do, or you will throw it. Okay, so that you will decide after the breakdown. Okay, and of course the machine, this point you have to mention that it cannot be used during repair period. Okay, production hours will be lost. So you should not go for breakdown maintenance where the production hours lost are very critical. Okay, that time you cannot go for breakdown maintenance. Fine. So this is the main thing about breakdown maintenance. Second is what we call as preventive maintenance. Okay, this is called as preventive maintenance. Okay, so simple example, just now I gave you the example, is your servicing. Now you are, so first what you did, you used to just ride your bike, drive it as many days. Once it breaks down, then give it to the mechanic. Okay, so that is one way. Second is every 6 months give it for servicing. Okay, so whatever is not proper, they will correct it. Okay, your mechanic will correct it. That is nothing but preventive maintenance. Okay, so this is a very popular thing. Okay, and this is the right way to do for critical work. Okay, or critical equipment, right? So it's these are synonyms: scheduled, planned, or preventive maintenance. Okay, scheduled, planned, or preventive maintenance. These are same as preventive maintenance. Okay, so it minimizes the problem of your breakdown maintenance. So if you give it for servicing, what will you see? He'll tell you that your clutch is not proper. You continue like this, it can break. So you should repair it, whatever, replace it. All those things he'll tell you, right? Locates weak parts, okay? Provide them regular inspection, okay? And some minor repairs, right? So your unanticipated breakdowns will be reduced, okay?
So this is the principle, which is prevention is better than cure. Okay, this is the main principle behind preventive maintenance, which is prevention is better than cure. Okay, prevention is better than cure. There's another saying which says a stitch in time saves nine. Okay, another saying is a stitch in time saves nine. Okay, meaning of this is like, if you're earlier on, if something got torn, that used to be stitched. So nowadays, people do not stitch their clothes that much, correct? So if you stitch it at the right time, then it doesn't get torn more. ठीक है, सही टाइम पे आप सी देते हैं तो फटता नहीं है. चप्पल्स का भी यही है. ठीक है, चप्पल्स, शूज, if you repair it in time, it will not deteriorate that fast. Okay, so that's why in these things ये है stitch in time saves nine. कहने का मतलब है सही टाइम पे आप मेंटेनेंस करोगे तो पैसे बचेंगे आपके. Okay, so that is it. So ठीक है, so prevention is better than cure बोलने से immediately what you should remember is preventive maintenance. Okay, right? Some these things they can ask in your objective questions. ठीक है, so which is why I retain these things. ठीक है, नहीं तो प्रिंसिपल प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है इसका. ठीक है, लेकिन अगर ये अच्छा एग्जाम में अगर आ गया कि विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस, इन विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस यू यूज द प्रिंसिपल प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ठीक है, वंस यू हैव गॉन थ्रू द चैप्टर मे बी यू विल नो, बट एक बार देख लिए तो फिर और भी इजी हो जाता है. राइट, दैट्स व्हाई आई रिटेन दीस थिंग्स. सो नाउ ओके, so it involves periodic inspection. ठीक है, periodic inspection, okay, to prevent breakdown. One is prevent breakdown and to harmful depreciation. ठीक है, ये harmful depreciation क्या है? एक तो ये है periodic inspection to prevent production breakdown. Okay, that is straightforward. And harmful depreciation, depreciation harmful depreciation ये है कि अगर आपका कभी कभी सपोज इन योर बाइक, ठीक है, अंदर कुछ ये होते हैं ना आपके, सम सर्टेन थिंग्स गेट कट, जैसे बाइक अपने व्हील्स वगैरह में जो है ना एक्सल होता है इन योर व्हील्स. ओके, वो कभी कभी कट जाता है. ओके, इफ इट गेट्स कट एंड यू डोंट सी इट व्हेन योर बाइक रन्स, it will deteriorate very fast. Same for machineries, there will be some parts internally. Okay, if there is a cut or something in a small part, okay, somewhere, if you see it in time, repair just that part, you are fine. If you leave it like that, okay, then it will the cut will go on increasing. ठीक है, वो बहुत बड़ा आपका नुकसान हो जाएगा उससे. राइट, तो उसको बोलते हैं हार्मफुल डेप्रिसिएशन. यानी वो नॉर्मली डेप्रिसिएशन जिस रेट में आपका होना है उससे फास्ट होगा ना, वो डैमेज है बेसिकली. राइट, so that's the damage that is called as harmful depreciation. Okay, चलिए ठीक है. तो ये है नेक्स्ट जो हम ये देख रहे हैं, दिस इज कंपनी शुड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ फेलियर ऑफ कंपोनेंट्स. फेलियर का रिकॉर्ड जरूरी है, ओनली देन यू कैन मेक अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. ठीक है, स्टैटिस्टिकली एनालाइज द फेलियर पैटर्न, then you will know. So once you analyze it statistically, okay, and you form a percentage, like earlier I had given you an example of 10% failure rate. Okay, so if it is statistically analyzed, then what will happen is your failure will be say 9%, 11%, 10%, around that. Okay, it averages out. Okay, I'm not saying for an individual machinery. Okay, for an individual machinery it can be different, but for the group of machinery you have, okay, it will be same. The total average percentage is always seen to be stable. Okay, चलिए, so ठीक है, so this reduces unanticipated breakdowns, increases availability of the equipment. Okay, ये तो इसमें कुछ बोलने लायक कुछ है नहीं. Right, optimum productive efficiency reduces the work of maintenance job. यानी जो if there is good productive efficiency of machinery, ठीक है, machinery itself is
वेरी एफिशिएंट, ठीक है। तो मेंटेनेंस का काम कम रहता है उसमें, ओके ओके। एंड इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड सेफ्टी ऑफ द लाइफ ऑफ वर्कर। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके राइट। तो ये इसमें इसको एक और तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है, ऑल्दो दिस सेंटेंस नॉट मेकिंग टू मच ऑफ सेंस, ठीक है। ऑप्टिमम प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ मशीनरी, ठीक है, reduces the work of, ये हो सकता है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, ओके। देयर इज गुड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी where you are doing proper preventive maintenance, then your breakdown maintenance work will reduce a lot, okay, ठीक है। और increases productivity, that is very much there, and this is also very important, ठीक है। चलिए, सो ये है, ओके। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, हु डज द मेंटेनेंस वर्क? So see, whether it is your preventive or breakdown maintenance, it will be done by the maintenance team, correct? Maintenance team only will cater to these things, maintenance, whether it is preventive or breakdown, ठीक है। breakdown के बाद भी जो आपको करना है, maintenance का ही टीम ही करेगा आपका, right? okay, so for bigger organizations, as I said, there is a maintenance department, ठीक है। bigger organizations will have a dedicated maintenance department, but smaller organizations में the production department itself will take care of maintenance, ठीक है, depending on the size of the plant, okay। So better, always better to maintain records, okay। So it's records of not just the cost, labor, materials, spares, okay, but you also have to maintain how often it breaks down a certain thing, how often it breaks down a certain component. For example, this spare, you would know, spare A, okay, it breaks down every 6 months, एक आपको एक idea रहेगा। Based on that, you can always buy and keep it ready, okay। तो इसमें यही मेन पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था just in the beginning, okay। The thing is, like, if you just overstock it, you might say if you're spending 75 crores in maintaining spares, whereas statistically, if you do proper analysis, you can do with 40 or 50 crores, okay। So this much is the difference, fine, ठीक है। So okay, so here the thing is, so if you maintain all details, okay, you can always find out what benefits you are getting from preventive maintenance, ठीक है। How you will get the details of benefits, okay, just go for a 3 year period, let us say, कितना भी आप 1 साल भी देख सकते हैं, 5 years भी, if we go for a 3 year period, okay, last year, okay, previous जो है आपका last 3 years, let us say these are previous 3 years, okay, let me say, okay, previous, okay, this previous 1 2 3, okay, and this is current 1 2 3, okay, this is current 1 2 3, ठीक है। So in previous 1 2 3 you did not have, let us say, preventive maintenance, आपको कॉस्ट मालूम है, एनुअल कॉस्ट यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट आपको लगा था, let us say 50 lakhs, here it was, ठीक है, here it is 60 lakhs, okay, here it is, let us say 55 lakhs, ठीक है, सारा कॉस्ट है ना, whatever production lost and all that सब मिला के, okay। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में अच्छा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ब्रेकडाउन होगा ही नहीं ऐसा तो नहीं है, राइट, देयर विल बी ब्रेकडाउन if you are getting your bike serviced every 6 months, you're getting it serviced every 6 months, is there a guarantee that it will not break down at all? No, okay, but if you do not service it regularly, okay,
there can be 4 breakdowns in a year. Okay, if you service it regularly, then there can be, let's say, 1 or 2 breakdowns, correct? It will reduce, right? So here, if you see the cost, wherever, if at all a breakdown has happened, that cost, and now for preventive maintenance, you have to spend some money, isn't it? That total, if you see, let us say if this is on an average of 25 lakhs, ठीक है? डेटा जो है तो आप देख सक रहे हैं यहाँ से, ठीक है, कि now after preventive maintenance the cost is less. Okay, so you will have you will be able to very nicely judge the benefits derived from preventive maintenance if you have proper data. Right, now we'll just see some formulae. So these formulae would not be useful for you in your exams. Okay, these are just general formulae. Okay, so first thing here is, okay, so these are just general things which you should just remember. Okay, these are some metrics. Okay, बोलते हैं metrics और matrices. ठीक है, इसको most organizations observe this. ठीक है, so if you know their metrics are within these statistics, then they are doing well. ठीक है, ये उसके लिए है, इसका आपको प्रॉब्लम वगैरह भी कुछ आने का चांस नहीं है इसमें से कुछ. ओके, ओनली थिंग जस्ट यू नीड टू नो कि ये कैसे कैलकुलेट होता है, वो ध्यान में रखना है. ओके, सो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है आपका, दैट इज इंस्पेक्शन इनकम्प्लीट अपॉन इंस्पेक्शन स्केड्यूल्ड इनटू 100. ठीक है, यानी इंस्पेक्शन इनकम्प्लीट, दिस इज अ मैट्रिक्स फॉर आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए. ठीक है, सो इंस्पेक्शन स्केड्यूल्ड, सपोज 100 इंस्पेक्शन स्केड्यूल किए उन्होंने. ठीक है, तो देयर जॉब वाज टू डू 100 इंस्पेक्शंस. ओके, एंड दे कुड डू 95 इंस्पेक्शंस. ठीक है, ओके, 95 किए, यानी कितना इनकम्प्लीट है हमारे डेटा के हिसाब से 5%. करेक्ट, 5 इज इनकम्प्लीट, so 5 upon 100 is 5%. Okay, so that's what they are saying. Inspection which is incomplete upon total schedule जो है वो होना चाहिए 10% से कम होना चाहिए. ये एक मेट्रिक्स है, यानी whatever say at the beginning of the month पूरे मेंटेनेंस टीम को आपने जितना टारगेट दिया है, ओके ओके, दे शुड बी अबव 90% ऑफ. ठीक है, वो इसका मतलब है. ओके, तो ये एक चीज है. और सेकेंड इज, ओके, hours worked for maintenance into scheduled hours. ठीक है, this is also for maintenance team. Scheduled hours is कितना hours उन्होंने काम करना चाहिए. Okay, right, how many hours. So how you will calculate is, you will see how many employees you have got, कितने maintenance employees है, just make provision for leave and all. जो बाकी जो workable time है, that will be your scheduled hours. Okay, which your maintenance people should have worked. Okay, और ये है आवर्स वर्कड फॉर मेंटेनेंस. ठीक है, सो टोटल जो उनके स्केड्यूल्ड आवर्स है, ओके, उसमें से कितना आवर्स उन्होंने काम किए हैं मेंटेनेंस वर्क के लिए. ठीक है, राइट, और यानी उससे ये पता चलेगा, विल गेट टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट इनटू 100 है ये. ठीक है, ओके, सो आवर्स वर्कड फॉर मेंटेनेंस अपॉन स्केड्यूल्ड आवर्स इनटू 100. ओके, इनटू 100 इज बिकॉज परसेंटेज में चाहिए. ठीक है, इससे ये पता चलेगा आपको आइडल टाइम कितना है. स्केड्यूल्ड आवर्स, टोटल स्केड्यूल्ड आवर्स वेर 100 लेटर्स से. ठीक है, बट आवर्स दे हैव डन फॉर मेंटेनेंस इज 70, यानी 30% आइडल टाइम हो रहा है. दैट यू विल हैव टू चेक. ओके, ये परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट. ओके, कौन सा डिपार्टमेंट? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट. ओके, इसको आप नॉर्मल डिपार्टमेंट के लिए भी यू कैन यूज दिस मैट्रिक्स. ठीक है, कोई और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए. ठीक है, देयर यू कैन जस्ट सी जो टोटल स्केड्यूल्ड आवर्स ऑफ दैट डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दैट उसको ले लीजिए, और ये आवर्स वर्कड फॉर मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस आवर्स, ठीक है, उसको ये आवर्स से काट दीजिए.
just remove the maintenance hours from their production hours. So then you will know कितना how much work they are doing. ठीक है, वो भी एक तरीके से इसको देखा जा सकता है. So ये सब जो चीजें थी, these are all normal matrices. ठीक है, so different departments can use it differently. इसीलिए you don't have any problems for this. इसको बस ऐसे ही आपने ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बताया वही है. Just this one, just take it from the point of view of maintenance department. ठीक है, scheduled hours of maintenance department upon hours worked, वो आपको that will give you performance of the department. Okay, चलिए, the next is show downtime as a ratio of available hours and compare against standard. ठीक है, show downtime as a ratio of available hours and compare against standard. ठीक है, तो जितना डाउन टाइम है, डाउन टाइम क्या है कि when factory could not function. ओके, फैक्ट्री फंक्शन नहीं करेगा. क्यों फंक्शन नहीं करेगा? बिकॉज मे बी देयर इज सम ब्रेकडाउन और मे बी सम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क इज गोइंग ऑन. दे हैव स्टॉप्ड द वर्क टिल दे डू द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. ठीक है, देयर आर टू वेज देयर कैन बी डाउन टाइम. ओके, तो डाउन टाइम मतलब जब आप काम नहीं कर सकते. आप जब बाइक को आप सर्विसिंग को देते हो तो वो एक दिन आपका डाउन टाइम, एट वन डे इज योर डाउन टाइम, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू यूज योर व्हीकल, राइट, till he gives you back. So that is called as downtime. So downtime as a ratio of available hours. Okay. So you have a downtime in hours upon available hours. ठीक है. This will just give you downtime का percentage कितना है वो आपको पता चल जाएगा. Okay. और यहाँ पे what is available hours? ठीक है, available hours कैसा रहेगा आपका? Working days into hours per day. ठीक है, वर्किंग डेज इंटू आवर्स पर डे, ये हो जाएगा एक आदमी का. ओके, और एक मशीन का. वर्किंग डेज इंटू आवर्स पर डे, तो वन मशीन आवर्स मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मशीन, सो टोटल अवेलेबल आवर्स ऑफ फैक्ट्री विल गेट. ठीक है, इस तरह से है. तो मैं इसके आपको एग्जांपल्स नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका उतना प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, विच इज व्हाई यू हैव गॉट अबाउट more than 10 examples. ठीक है, about 12 examples हैं, लेकिन these formula have not been used. ये नहीं, फोकस पूरा स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला पे. ओके, तो ये बस आपको एक बार देख लेना है, आपको मालूम होना चाहिए क्या है. ये सब बिल्कुल सिंपल है, हम अपने लॉजिक से समझ सकते हैं. ठीक है, these are all simple formula, just remember this and keep, that's all. ठीक है, you might not get a problem, maybe an objective type somewhere they can arrange it. ठीक है, चलिए, क्या व्हाट इज डाउन टाइम दैट यू ऑल नो. ओके, टोटल स्टॉपेज ऑफ मशीन. ठीक है, चलिए, देन व्हाट इज नेक्स्ट? फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेकडाउन्स. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेकडाउन्स, कितने बार ब्रेकडाउन हो रहा है, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स अपॉन अवेलेबल मशीन आवर्स. इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स टू द टोटल अवेलेबल मशीन आवर्स. ठीक है, तो इसको जो है प्रैक्टिकली ज्यादा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि फॉर बिग कंपनीज इसी अवेलेबल मशीन आवर्स विल बी 1 लाख आवर्स और समथिंग, और उसमें अगर एक दो या चार ब्रेक डाउन हुआ है तो आप 2 को 1 लाख के साथ कैसे कंपेयर करेंगे, राइट. तो विच इज वाई ये ये जो है, जैसे ब्रेकडाउन का मैट्रिक्स नॉर्मली ऐसा होता है, वेर यू सी द टाइम लॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्टिव टाइम लॉस्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन्स अपॉन अवेलेबल मशीन आवर्स. तो टाइम टू टाइम कंपैरिजन हो जाता है. ओके, दिस हैज बीन गिवन फॉर यू, जस्ट आई एम जस्ट showing you as it is. Okay, so frequency of breakdowns is number of breakdowns upon available machine hours. ठीक है, next is efficiency, effectiveness of planning. ठीक है, so effectiveness of planning जो है, that is so यहाँ पे है गया. ओके, effectiveness of planning जो है, that is labor hours on scheduled maintenance. यहाँ पे क्या बता रहा है, effectiveness of planning
कितना effectively हमने plan किए, how well we have planned. Okay, so labor hours on scheduled maintenance upon total hours spent on maintenance. ठीक है, so labor hours on scheduled maintenance upon total labor hours spent on maintenance. ठीक है, यानी ये है scheduled maintenance, so total में क्या होगा, scheduled और non scheduled maintenance, correct. breakdown maintenance भी denominator में आ जाएगा. ये total maintenance है, ओके, और ये scheduled maintenance. तो यहाँ पे बेस्ट क्या है, ओके, कि टोटल मेंटेनेंस और शेड्यूल मेंटेनेंस एकदम करीब करीब सिमिलर होना चाहिए. दैट मीन्स देयर इज नो सरप्राइज. सो इफ दिस टोटल लेबर आवर्स इज 100 here, okay, and your scheduled maintenance hours is 98 and total hours is 100, what does this mean is, okay, so your total maintenance is 100, of that preventive maintenance is 90. It's only 2 hours you have spent on breakdown. That means the preventive is very good, correct. Your scheduled maintenance work is very good. That's why this should be very close to each other, these two. ठीक है, यानी रेशियो में 100% के करीब रहना चाहिए. जितना 100% के करीब है उतना बेहतर. ओके, तो इसका और एक तरीका है ये चीज बताने का. ठीक है, यू कैन से effectiveness of planning is downtime due to schedule maintenance. ठीक है, here just say downtime due to scheduled maintenance upon downtime due to total maintenance. ठीक है, there what did we saw, scheduled labor hours on scheduled maintenance, labor hours on total maintenance. ठीक है, अब labor hours को पूरा मत लीजिए ना, just see the impact of downtime. ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला कब यूज होगा, अभी मैं ये बोल रहा हूं. ठीक है, लेबर आवर्स ऑन शेड्यूल्ड मेंटेनेंस ये है 98 अपॉन 100. ओके, तो हम बोलेंगे कि बहुत अच्छा चल रहा है सब, करेक्ट. लेकिन जो डाउन टाइम जो आपने ये जो इसमें जो 2 है, 2 आवर्स इज फॉर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, करेक्ट. आउट ऑफ 100 2 आवर्स इज ब्रेकडाउन मेंटेनेंस. वो 2 घंटे में अगर आप बहुत ज्यादा डाउन टाइम हो गया, आपका काम रुक गया, ओके, then you want to measure it that way, right? Then this doesn't give you a rosy picture, it doesn't show you कि बहुत अच्छा है. ठीक है, तब आपको आपके लिए बेटर रहेगा कि आप डाउन टाइम के हिसाब से मेजर कीजिए. so downtime due to scheduled maintenance upon downtime due to total maintenance, this is how you will compare. तो ये है, तो ये फॉर्मूले को आपको जस्ट गो थ्रू लॉजिक के साथ देखिए ऐसे, एंड यू शुड बी एबल टू रिमेंबर इट व्हाट इट इज. ये 5 चीज आपको बस मालूम होना चाहिए. एज आई सेड, chances of any problem is very very remote on this. ठीक है, otherwise because whatever problems are given, we get a citer of it in the study material. हमको पता चल जाता है कि what are they trying to ask you. Okay, so this is just, you can have some theory kind of questions. Okay, लेकिन having said that, एक बार फॉर्मूला आप देख लेना क्या क्या है पूरा. ओके, चलिए देन नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. ये तो आप खुद ही बता सकते हैं. ओके, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस? reduced breakdown and downtime, greater safety of workers, fewer large scale repairs, okay, because everything will be detected early on, less standby or reserve equipment or spares. ठीक है, you don't need too much of reserve equipment, right? So this is also an advantage. Lower unit cost of the product manufactured. So this is an observation. It's been observed that always with preventive maintenance, your unit cost is always less. Okay. And better product quality, definitely, right? And increased equipment's life, right? If any small problem is there, okay, you can recognize it then and there. Okay, so it increases equipment life. Better industrial relations. So if you are, see, one more way I'll tell you. Okay, it's beyond statistics. There are certain things. Better industrial relations. Okay, so if say by breakdown maintenance, my cost is 50 lakhs. Okay,
and by preventive maintenance, my cost is 80 lakhs. Okay. Okay. So now preventive maintenance is costlier, right? This might appear good, but because if you are going for untimely breakdown kind of maintenance, okay, what will happen is you will lose out on some orders, some important orders, right? So there will be in revenue, you will see some disturbance. You can have some long-standing customers who will move away from you. Okay, fine. So, which is why the impact is not just to be seen from a cost perspective. ठीक है, यहाँ पे इसका impact revenue में गिरेगा, ये breakdown का. ओके, तो आपके हो सकता है बहुत सारे कस्टमर्स चले जाए जिससे आपको एक another 50 lakhs का लॉस हो जाए. ओके, चलिए. ओके, so these are your, ये सब जो point wise things, no, just don't leave in OMSM. Do all these point wise things. Okay, 2 questions you will get these point kind of things. That is a sure shot 10 marks for you. Okay. Third is routine maintenance. Now, preventive maintenance and breakdown maintenance, those are the 2 bigger maintenance techniques. So apart from this, there are some routine maintenance which is done, like oiling and all. Okay. So it includes lubrication, cleaning, overall, etc. Okay. This is done while equipment is running or pre-planned shutdowns. Okay. So here, this is general, when machine is running, you can do some oiling, certain things. Okay. So it is, you can subdivide it as a form of preventive maintenance. Okay. But, this is a little smaller in significance. Preventive maintenance is detailed and you will see all internal machinery and whether everything is fine or not. Okay. Routine maintenance is not, some lower end employee will do it. Okay. Oiling and all that. This is called as routine maintenance. One important feature of routine maintenance is you can do it when the equipment is running also. Okay. So running maintenance is the work which can be carried out when facility is in service. Okay. Small things. And the next is your maintenance techniques. Okay. Some techniques we will see. So these are types of maintenance. We have seen 3 types of maintenance. Okay. Now, some techniques, what techniques are used during maintaining? One is standby equipment. Okay. So for little smaller things, okay, there is a big machinery, there is a huge machinery. Okay. It will have many parts, correct? So we will call, if you are just maintaining some part of this, okay, there is a huge machinery, we are maintaining some part of this. This is one part, let us say here. Okay, that will be called as spare. Okay, that will be called as spare. Right, spare is also a backup equipment. But if you have one AC, you are keeping another AC for backup. Okay, then you will not call it spare. It will be called as backup equipment. Okay, because it is equal, it's an equal equipment. Okay, so that way, technically your spares and your backup equipment or standby equipment is the right word. Okay, standby equipment. Okay, these two do the same work. The only thing is that your spares are parts of the equipment. Standby equipment will replace the total equipment. Okay. In some case, okay, losses is very high, so you have to keep a standby equipment. Okay, you cannot be without that machine even for half an hour. Okay, so you need to have a standby equipment. Okay, and we all know how standby works, right? Original equipment fails, then the standby comes. Best, your daily life example is your generator. Okay,
When electricity goes, generator starts, correct? That's a standby equipment. Okay, fine. And they're kept to reduce the loss due to breakdown of key machine, right? Fine. So in both types of maintenance, you have standby machines. Okay, because why? Because in preventive maintenance also breakdown can happen, right? It's not that it will not happen. So if there's some machine which is very critical, if that machine stops, it is as good as your company will stop with it. Okay, then you have to keep a standby equipment. Fine. So now main question is how many standby equipment you will keep and for how long. This is done by cost benefit analysis. Okay. So how many standby machines we need to keep, okay, and how long? So whether you should keep 10 standby equipments or whether you should keep 15, okay, that would be based on cost benefit analysis. It's a statistical analysis. Okay, we will see that in some of your problems. Fine, we'll see in your problems you will see how cost benefit analysis is done. Okay. And then cost involved in standby machines. So what is the cost involved in standby machines? Okay, this is important. You can be asked in a theory question. Okay. So cost involved in standby machine. First is interest on capital investment. You are investing capital on the standby machine. So that interest. Okay. Space is needed to keep them. So space, you are using a space. If it's a large machine, it will consume more space. Okay. So it is using a part of your factory rent. Okay. Then depreciation. So if a machine if it's a new machine, it is kept not used. Do you think it will not lose value after 2 years, even if it is not used? It will lose, right? So there is depreciation in value of standby equipment also. Okay, many times depreciation just happen if an equipment is kept unused, then it will get depreciated. Certain things which are meant to be moving, if you keep it on stationary position for a long time, then it doesn't function well. You can take the example of, you might have some vehicle, bicycle, which you have kept in your house for a long time, right? And then even though, it was in running condition when you kept it, then if you want to take it out again after a year or so, you'll have to repair it first, right? Third is depreciation in their value also happens. Then periodic checking and servicing is necessary for that also. So all these four are cost of standby equipment. Okay, remember this cost of standby equipment means if 4 points are, if it's a 4 marks question, okay, or a say 3 marks question, you have to write it perfectly. Okay, only then you will get marks. What are the benefits of standby? Protection against complete shutdown. Okay. Okay. So it avoids loss of production, and to estimate loss on future failures, table of expected costs and benefits can be prepared. So again, this is cost benefit analysis. Okay. Right. So cost benefit analysis is this is what they have already given you what the costs are. So note down all the costs of standby machines and then find out if the standby machine was not there, then what was the chance of breakdown and what was it costs? What was the cost? That you will also get from previous data. So you will then come to know that with this standby machine, how much loss you have averted. So see, as I'm telling you, it's not always what loss you are averting. Okay. हमेशा इसकी बात नहीं है कि कितना हमारा लॉस हो रहा है. कभी कभी आपको अपना रेपुटेशन प्रोटेक्ट करने के लिए भी रिलायबिलिटी देना पड़ता है. You have to give reliability to your customers, right? It's not always that blank profit or loss thing. Okay, right. Then next is shifting. अच्छा, this is another standby रखने का better way है ये. Okay, this is a better way of keeping standby
equipment, shifting production during breakdown. Okay, what you do here is you will not keep a separate standby machine. Okay, but you will keep one extra machine and reduce the use percentage of each machine. Okay, so if one machine requires shutdown, the other machines can run. Okay, so and these capacities of all machines here can be matched. So I'll tell you what this is with an example. Okay, so here you have got now 4 machines. Okay, 4 machines are required for your work. Okay, so each machine, say it produces 100 units, that's its work. Okay, here what you will do is you will put a in this type of maintenance, put a fifth machine. Total you want 400, right? Okay, and change this to 80-80. Okay, so again this is 400. Okay, again this is 400, right? And you have reduced the load, so naturally it will increase the life of this. ठीक है, so in the end एक extra आपने डाले, उसका खर्चा नहीं लगेगा क्योंकि सबका लाइफ थोड़ा बढ़ जाएगा. Okay, and now if ये ब्रेक डाउन हो जाता है, then again you have 4 running machines. ठीक है, ये इसको आप 100 कर लीजिए. Okay, till you repair the other machine. Okay, that will get repaired, it will come back. ठीक है, जैसे आया फिर से आपका ये पोजीशन रिस्टोर हो जाएगा. करेक्ट, सो दिस इज, ये है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग प्रोडक्शन ड्यूरिंग ब्रेकडाउन. ओके, दिस इज अ बेटर वे ऑफ मेंटेनिंग स्टैंड बाय इक्विपमेंट, क्योंकि स्टैंड बाय इक्विपमेंट को आप वैसे ही रखेंगे ना विदाउट यूज, एंड दिस आर ऑल वी आर टॉकिंग ऑफ वेरी कॉस्टली इक्विपमेंट. ओके, so it should be in working condition always. That's why this is a better way of maintaining standby equipment. ठीक है, okay, so then next is maintenance organization. Okay, fine. ठीक है, so maintenance organization. ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का मेंटेनेंस सेटअप कैसा होना चाहिए. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज 50 to 60% ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इन बिल्डिंग एंड प्रोडक्शन फैसिलिटीज. ठीक है, एंड मेंटेनेंस टीम टेक्स केयर ऑफ दिस, राइट? सो इट टेक्स केयर ऑफ अ वेरी वेरी लार्ज वैल्यू. ओके, ठीक है, सो इसका यू हैव टू डू इफेक्टिव मेंटेनेंस, राइट? तो इसके लिए हमने ये देखा कि मेंटेनेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो इट हैज टू हैव अ प्रॉपर प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ठीक है, सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज मेंटेनेंस एंड ऑल, most top level managers, they don't keep a direct line with maintenance. They are treated as little lower level staff, maintenance department. Okay, but it should not be the case. That they should have a proper place in the organizational structure. Okay, because they are handling too much of value. Okay, and there must be clear division of authority with little or no overlap. So कई बार क्या हो जाता है ना, when you have got, say you have got very long chain of your organizational structure, then a top level manager will not know what is going on. That's why it is said that you should have shorter structures for maintenance, because maintenance can be very costly to the organization. So don't ignore it. Okay, it must have clear division of authority with no overlap. Overlap is sometimes there are dotted line reportings. Okay, so there will be an overlap of authorities. So this one employee, he reports here also and here also. Okay, then what happens if something doesn't happen? This manager will also keep quiet, he will also keep quiet. He will think that he will take care, this person will think that he will take care. Okay,
So that's why there should be no overlap in maintenance organization. ठीक है, बिल्कुल vertical lines of authority होना चाहिए. Okay, it should be as short as possible, and span of control 3 to 6 per manager. So one manager should only have 3 to 6 reportees, so he can very clearly see what they are doing. Okay, so actually maintenance is very, very important in manufacturing concerns. Okay, चलिए, an organization structure should be flexible. Okay, ठीक है, मेंटेनेंस कैन बी सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, ये दोनों भी होता है. वेयर मेंटेनेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, देन इट विल बी सेंट्रलाइज्ड. ओके, और इन सम अदर केसेस इट विल बी डिसेंट्रलाइज्ड. ठीक है, यानी जो बाद के जो मैनेजर्स है दे हैंडल मेंटेनेंस. ओके, और इन सेंट्रलाइज्ड ऑल मेंटेनेंस वर्क एंड ऑल ऑर्डर्स विल कम डायरेक्टली फ्रॉम द टॉप. ओके, so दोनों भी तरह से ये होता है. So whatever is the org structure of that organization, it can be centralized or decentralized. Based on that, your maintenance also will be centralized or decentralized. Okay, ये देखिए, ये आपका है मेंटेनेंस. ठीक है, so this is how your maintenance chart looks. Okay, headed by chief plant engineer. Okay, so ये है chief plant engineer. Now you can see, okay, this is the first line. You have first line. These are the things. One is works and service, maintenance workshop, safety engineering, maintenance stores and spares management. ठीक है, these are the first line reporting of all this. ठीक है, works and service के अंदर और सब टीम्स हो सकते हैं. Okay, and I'll tell you which is the team we are concerned with for the current chapter also. ठीक है, you see maintenance engineering. Okay, here you will have 4 divisions. Okay, these are the 4 divisions for maintenance engineering. Okay, maintenance contracts, planning, services and shops. तो यहाँ पे जो shops है ना, इसमें आता है आपका breakdown and preventive maintenance in these shops. ठीक है, और in planning के अंदर में आता है, under planning you have maintenance. Maintenance comes under planning, and under shops your breakdown and preventive maintenance. So ये है आपका what we are concerned with in this chapter. Okay, these are the 2 things, right? And your maintenance workshop, ठीक है, that is divided into 4 parts. ठीक है, your maintenance workshop here. Okay, this is divided into these 4. ठीक है, maintenance overhauls, spare fabrication, electrical repair shop, planning and drawing. See, this is the maintenance chart of a very large organization. ठीक है, ये जेनरिक है, तो हर जगह ऐसा ही स्ट्रक्चर रहेगा ऐसा नहीं. इट डजंट मीन दैट you will have the same structure everywhere. Okay, this is a generic chart which they have given you, that's all. Okay, that it will be something like this, that's what they are trying to say. And this particular one, if I see, if I tell you this chart, it looks like the chart of a very large organization, and they have given it also here of a large organization here. Okay, so in medium level organization, this much complex maintenance team will not be there. Okay, chaliye, so almost our theory is done. Okay, and then we will start with the problems. Little bit is there, I'll just complete it. I'll give you a break. Okay, and we'll come back and we can do the problems. So organizing maintenance work. Okay, there are 3 rules for proper control of maintenance work. Okay, 3 rules. So anyone is getting a maintenance work, you have to follow 3 rules. See, if anyone and everyone can
give work to the maintenance team. Okay, then what will happen? See, your maintenance team, okay, say it has in one day, let us say it has 100 hours at its disposal on one day. Okay, it's capacity to work. So now, if some unimportant work is given to them, okay, say you have a structure where the many other employees can raise a ticket to the maintenance team. Okay, so for small ordinary things and all, they are raising tickets. Okay, and say 50% of the time are consumed for ordinary work like this. Okay, then if there is some really big need, okay, then there will be a problem, right? They've already worked for these many hours. Okay, and then suddenly if there is a need for any big or critical requirement is there, so that will be a problem. So it is important, you're getting the point. So important that don't let everyone and anyone to give work to the maintenance team. Let responsible people give work to them. So not a team member, let there be a manager. Okay, the team member has some work, he has to go to the manager. Manager will raise a ticket with the maintenance. Okay, so that means he will not do for any frivolous thing or something which has got no importance, right? So इस तरह से ये करना जरूरी है, ऑर्गेनाइज अच्छे से कीजिए, don't misuse their time. That's basically the thing. There are 3 rules for that. 3 cardinal rules है. One is maintenance request, यानी इसको हम लोग टिकट बोलते हैं ना, टिकट रेस करते हैं जो ये सब डिपार्टमेंट, those who have worked they will know that we raise ticket to the कोई भी डिपार्टमेंट के से हमको काम लेना है इंटरनली, वी हैव टू रेज अ टिकट टू देम, राइट? ठीक है, तो इसमें दैट्स कॉल्ड मेंटेनेंस रिक्वेस्ट. इट मस्ट बी इन राइटिंग टू अ सेंट्रल पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये तो सब आजकल ऑटोमेटेड होता है, यू हैव टू कैन रेज इट थ्रू सॉफ्टवेयर. ओके, so you have to raise it to central point in the organization. No work without the approval of maintenance supervisor. ठीक है, otherwise it leads to wastage of skilled manpower and inability to schedule essential maintenance work. So ये भी ऐसा होना चाहिए, 2 ways. One, I said, the people who are raising, okay, make sure that some responsible person is raising the request. Okay, that's one. Here also from the maintenance side also, okay, make sure that a smaller level worker, he is not accepting directly. ठीक है, उसको क्या मालूम कि इसका रेस्पॉन्सिबल, इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है कि उसका, जो काम आएगा वो करने लग जाएगा, राइट? सो बेस्ट थिंग विल बी that a top level person in maintenance, he receives the request and he allocates. ठीक है, so then कोई skilled manpower अगर छोटे मोटे काम में लग गया, okay, then और कुछ better need आया तो आप फिर you will have to allocate some lesser talented employee for that, right? और lesser skilled employee. तो इसीलिए मेंटेनेंस रिक्वेस्ट बहुत जरूरी है, ताकि आप ठीक से आप allocate कर सकते हैं वर्क. ओके, the first rule is maintenance request. Second rule is maintenance stores. ठीक है, तो stores से ही समझ गया होगा आपको, it is your spare parts. ठीक है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स ड्यूरिंग ब्रेकडाउन से क्या हो सकता है? एक्सेसिव शटडाउन ऑफ प्लांट. तो इसीलिए आपको मेंटेनेंस स्टोर्स को प्रॉपरली हैव टू कीप. डू अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बिकॉज यू डोंट वांट टू स्टोर, you don't want to invest more money than is required. ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के साथ करना पड़ेगा ये. सो मेंटेनेंस स्टोर कीपिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल वर्क. ठीक है, लास्ट है रिकॉर्ड ऑफ मेंटेनेंस. जो जो काम हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखिए. ओके, रिकॉर्ड ऑफ मेंटेनेंस मस्ट बी केप्ट इक्विपमेंट वाइज. ठीक है, सारे इक्विपमेंट का डेटा यू शुड हैव. ओनली देन व्हेन ब्रेकडाउन हैपेंस यू विल नो कि व्हाट इज द ब्रेकडाउन हिस्ट्री ऑफ एन इक्विपमेंट. ठीक है, हिस्ट्री कार्ड्स और लॉग बुक्स ऑफ ऑल प्लांट्स एंड इक्विपमेंट मस्ट बी कंपाइल्ड. ठीक है, सो सारे इसका हिस्ट्री पूरा रहना चाहिए आपके पास बेसिकली. ओके, ठीक है, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट मटेरियल्स यूज्ड, कंपोनेंट्स रिप्लेस, टाइम स्पेंट, सो यू कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑल्सो.
So you should have details of time also. You can calculate the cost of repair also. ठीक है, and you should get the history of breakdown also, everything from the records. ठीक है, so तीन चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपका, 3 rules फॉर प्रॉपर कंट्रोल ऑफ मेंटेनेंस वर्क. ओके, ये तो थियरी में काफी चांस है आएगा. ओके, 3 rules ऑफ मेंटेनेंस वर्क इस चैप्टर में. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन. One is maintenance request, maintenance stores, records of maintenance. Very straightforward. Of course, if you remember the main headings, you can write based on that. ठीक है, चलिए बस हो गया, ये थोड़ा सा है. Then problems will start. So I'll give you a break after that. Okay. So requirement for having an effective maintenance department. ठीक है. What are the requirements for having an effective maintenance department? गुड सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट. ठीक है, अच्छा क्वालिटी का सुपरविजन होना चाहिए. गुड एंड क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू बी गिवन टू मेंटेनेंस क्रू रिगार्डिंग रिपेयर. इंस्ट्रक्शंस क्लियर होना चाहिए. ठीक है, प्रॉपर कंट्रोल ऑफ वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ठीक है, सो ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत कि देयर शुड बी गुड कोऑर्डिनेशन विद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ठीक है, स्पेशली जो आपका ये स्टोर्स होते हैं ना, जो आप रिप्लेस करते जा सकते हैं, रनिंग स्टोर्स जो होते हैं, रनिंग इक्विपमेंट. ठीक है, उसके लिए राइट, जो इसमें मैंने गिवन यू द एग्जांपल दैट इफ यू हैव 5 मशीन्स, करेक्ट, सो ये 4 मशीन्स दे आर डूइंग 100 यूनिट्स, है ना. ये वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने आपको. देन अगर 5th वाला आप ऐड करेंगे, ओके, तो ये कर सकता है. ठीक है, और ये तो एक हो गया. और एक चीज क्या होता है, कभी कभी देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ स्पेयर्स. उसका सर्विसिंग कैसे करते हैं कि यू कीप अ स्पेयर. ठीक है, मेंटेनेंस के पास स्पेयर रहेगा. सो टू डू द सर्विसिंग, मेंटेनेंस विल कम, ओके, दे विल ब्रिंग अ स्पेयर, ओके, दे विल रिप्लेस इट हियर इन द इक्विपमेंट. ठीक है, यहाँ इक्विपमेंट है आपका मेन. ठीक है, तो यहाँ आपका मेंटेनेंस टीम है. ओके, सो मेंटेनेंस के पास स्पेयर होगा. ओके, सो दे विल ब्रिंग दैट स्पेयर मशीनरी विच इज रनिंग. दे विल टेक आउट एन इक्विपमेंट. ठीक है, एक इक्विपमेंट मशीनरी से बाहर निकालेंगे. ठीक है, और जो इनके पास है इसको डाल देंगे इमीडिएटली. सो काम नहीं रुकेगा. ओके, और ये जो निकाले हैं उन्होंने, ये जो निकाले हैं इसका लेके जाके सर्विसिंग करेंगे, और होने के बाद इसको वापस लाके डाल देंगे और अपना स्पेयर्स लेके चले जाएंगे. ओके, दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ सर्विसिंग. ठीक है, सो हियर नाउ, सो प्रॉपर कंट्रोल ऑफ वर्क इन कोऑर्डिनेशन. सो ऐसे जो होता है ना, यू शुड हैव गुड कोऑर्डिनेशन विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. द वर्क इज गोइंग ऑन, so you have to properly speak to them, ask them. Okay, so ठीक है, मेंटेनेंस टीम में अगर नॉर्मली देयर आर पीपल हु आर नॉट वेरी कम्युनिकेटिव. ओके, सो गुड ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू द मेंटेनेंस पर्सनल. ठीक है, ये तो ट्रेनिंग वेल ट्रेन्ड बोल दीजिए. ओके, गुड स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस प्रोग्राम शुड बी चॉक्ड आउट. ओके, प्रॉपर मेंटेनेंस रिकॉर्ड कीपिंग. ठीक है, देन गुड स्टॉक ऑफ स्पेयर पार्ट्स. ओके, पर्टिकुलरली इंश्योरेंस स्पेयर से हम देखेंगे आगे, कल देखेंगे. टुमारो विल सी व्हाट आर इंश्योरेंस स्पेयर्स वगैरह. ठीक है, सो इंश्योरेंस स्पेयर नाम ये है कि ये जो है, जैसे आप इंश्योरेंस करते हैं आप अपना, वी डू अवर इंश्योरेंस, ये सोच के आप करते हैं कि आपका एक्सीडेंट होगा, कि आप मर जाएंगे और आपका लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा किसी को. ये थोड़ी सोचते हैं हम, राइट. while insuring, what do we think that this is not going to happen, right? So similarly insurance spares is something like that which will normally not be required in the life of the machine. ठीक है, कई बार तो वो मशीन वो रह जाएगा, स्पेयर्स पूरा साल निकल जाएगा, उसका काम नहीं आएगा. ओके, दैट इज कॉल्ड एज इंश्योरेंस स्पेयर. लेकिन अगर काम आ गया उसका कभी,
काम आ गया और आपके पास वो नहीं रहा, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. That is called as insurance spares. Okay. If the work comes, okay, if you require that spare you don't have, then you will lose a huge amount of money. Okay, but it will normally not be required at all. Okay, so that's called as insurance spares. ठीक है, एक मिनट. ठीक है, so I'll give you a break. थोड़ा सा है और 3 points. Okay, so you tell me. 949, 959. Okay, 949, right? So 10, 10, 10, 5, 10 10 बजे से 10:05 में रखें. 10, 5. ठीक है, ठीक है, 15 minutes. Okay, 10, 5. ओके.
Okay, so let's continue. Right, next is maintenance problem. Okay, what is the maintenance problem which we have to solve? Okay, so now in maintenance, what you have to do is, okay, you have to minimize the overall cost without sacrificing the objectives. Okay, main thing about maintenance is you have to minimize the cost. Okay, and things which have to be readily available. Okay, so you have to see the objectives of the business also, right? So you have to go as per the objectives of the business. Okay, like if for certain, now there is certain machinery which has to be available, even though the cost is more for making it available all the times, but it is important from the business point of view to make it available all the times. Okay, then you will have to go as per it. Okay, so the business objective also you will see, and you will also try to reduce the overall cost. Okay, this will save expense of inspection and replacement before lifetime ends. Okay, so there will be one more alternative, which is replacing machine before the expiry of its working life. Okay, so if you want to, if you try to replace a machine before expiry of working life, okay, then you will have to do cost benefit analysis. Okay, this will involve cost of periodic shutdown for checkup and repairs. Okay, but you can avoid loss of sudden failure. So here in the maintenance problem, so main thing what you have to see is, okay, so if you are trying to replace a machinery, okay, before its life ends. Okay, for example, uh, you have a machinery after 2 years, it has got 2 years life. Okay, it has got 2 years life. Now you have another new machine which you can buy now. So now for this machinery, current machinery, you have 2 years remaining. Okay, so now, but the thing is, now it is using up lots of fuel. Okay, so if you buy a new machinery, okay, what you will have to see is, say this machinery cost is, let us say 50,000 is remaining. Okay, 50,000 is remaining for 2 years, right? Now if you buy a new machinery, okay, so say you can, if by buying a new machinery, whatever is the depreciation of that new machinery in these 2 years. Okay, so let us say 10,000 is the depreciation. Okay, and 10,000 is the depreciation of this machine. So 10, 10, 20,000 is what you are spending just out of, if you are buying the new machine. Okay, apart from this, the net saving which you have, okay, in fuel. So here, whatever fuel cost you need, let us say you need fuel cost of about 25,000 here. Okay, you need fuel cost of about 25,000 here, and here you can do that in, let us say, 15,000. Okay, so so here for your old machinery, the cost is 50,000. Okay, plus you will need fuel of 25,000, 75,000 you will need to run this machinery for 2 years. But now itself, if you replace it, okay, so now itself, if you replace this machinery, okay, so let us say, so what I'm trying to tell you is, say you can sell this machinery. If you sell it today, you are getting 50,000 for this machine. Okay, okay, if you sell it today, you're getting 50,000 for the machine. If you are ready to dispose it of today, you can get back whatever value it is. Okay, and let us say this is 40,000, but 40,000 is the, if you retain, go ahead with it,
40,000 will be the fuel expenditure. Okay, whereas here what will happen is you will have 20,000 will be depreciation and 15,000 will be fuel expenses. Okay, in this case, what will happen, what you will do is, what you can do is, you can sell this off now itself. Okay, you can sell this off now itself, and what cost you will have is 35,000. Okay, if you do not sell this, then what cost you will have? You will have this 40,000 for 2 years. Okay, plus this 50,000 for 2 years will be your depreciation. Your cost will be 90,000. Okay, so this is just an example of replacing a machinery prematurely. So what you have to see here is, okay, you have to see what will be the current cost of the old machine. You have to consider all costs. Its running cost, of course, old machinery running cost will be more. That also you have to consider, and whatever amount the machinery carries right now, that also you have to consider as depreciation. And then you have to compare with the new machinery. Okay, so then you will get to know that. So in maintenance problems, see, now all these things you need not write, because the only thing what you have to just tell is, you have to, first thing is, reduce the cost without sacrificing the objectives. Okay, and you've got two alternatives. One is breakdown maintenance, that is repair only when it breakdowns. Okay, so here you can save the inspection cost and all that. Okay, other is replace the machinery before the expiry of its working life, which we saw. In this you have to do cost benefit analysis. Okay, another thing, so in between the two will be, don't replace it prematurely, but keep on doing preventive maintenance. Okay, so the two types of cost, premature replacement and cost of breakdown, okay, need to be balanced. So whenever you are going for premature replacement, okay, you will have to balance the two costs. Okay, like I showed you there. Okay, fine. Then preventive maintenance is justified only when average downtime and its cost is less. Okay, so if you are doing preventive maintenance, then you should save as far as average downtime is concerned. Okay, so overall it should be more beneficial than your breakdown maintenance. Always keep in mind, although we are talking about only the economic parts here, there are some non-economic things also, like some contracts. Okay, so you might be surviving because of one contract right now, one main contract, and if there is a breakdown, you can lose that contract. So even though preventive maintenance is more costly, you will still continue with it. Okay, that's another way to look at it. ठीक है, तो ये सिर्फ हम मनी के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से नहीं देख रहे हैं. फ्रॉम अ पॉइंट इकोनॉमिकली, इफ यू सी, so preventive maintenance is justified when the average downtime and its cost is less than the average time taken to carry out breakdown repairs. ठीक है, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप तभी करोगे जब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस से जो डाउन टाइम होता है, okay, उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है. ओके, इफ मशीन इज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन लाइन. अच्छा, ये और एक चीज ये है, कभी कभी मशीन आपका एक प्रोडक्शन लाइन का पार्ट होता है. ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, सी मशीन इज लाइक दिस. ओके, दिस इज वन मशीन, दिस इज 2, 3. ओके, सो पार्ट ऑफ अ प्रोडक्शन लाइन. अगर इसमें बीच में, ठीक है, दिस मशीन ब्रेक्स डाउन, तो ये दो मशीन भी यूजलेस हो जाते हैं अभी. ठीक है, so when it is part of a production line, then you breakdown के टाइम पे you will not only see इस मशीन से क्या नुकसान, इस मशीन से रिलेटेड जो मशीन है वहां पे भी आपका नुकसान होगा. ओके, there will be some loss in related machines also, that also you have to see.
ठीक है, दिस आई थिंक द लास्ट पार्ट, या ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस। चलिए, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन। ठीक है, नाउ वेयर एंड ऑब्सोलेसेंस आर टू मेन कॉजेस ऑफ रिप्लेसमेंट। मशीन को क्यों रिप्लेस करते हैं? क्योंकि चलते 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 वो खराब होते जाता है, दैट्स कॉल्ड एज वेयर। Obsolescence is something, new technology has come, so now this is become useless. Okay, इसीलिए जब मशीन when appliances are designed, you try to reduce wear, तो उससे क्या होता है कि it will run for a longer time. Okay, next is ये technological obsolescence जो है, इसमें तो इसमें आपका नई नई मशीनें भी आपका स्क्रैप बन जाएगा ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, जैसे सपोज यू हैव नाउ बॉट अ सॉफ्टवेयर, आपने कोई सॉफ्टवेयर लोड किया है। ओके, सॉफ्टवेयर यू हैव बॉट फॉर 5 lakhs। ठीक है, अभी आपके इन 3 months नया न्यू सॉफ्टवेयर आ गया। ठीक है, एंड एवरीवेयर ऑल कंपनीज हैव रिप्लेस दिस सॉफ्टवेयर विद दिस सॉफ्टवेयर। अब ये पुराना सॉफ्टवेयर रख के आपको कोई फायदा नहीं ना। ठीक है, नाउ यू हैव टू गो फॉर द न्यू सॉफ्टवेयर, सो ये 5 लाख वेस्ट हो गए आपके, राइट? दिस इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, ठीक है, a machine is technically obsolete when another machine can do the same job efficiently in reduced time and lower cost. ठीक है, and another machine comes, it can do it at a lower cost quickly. ठीक है, then old machine becomes obsolete, right? Okay, so ये हो गया। For replacement decisions, what you have to decide is when to replace, time decide करना पड़ता। okay, so you have the current machine, जैसे मैंने वो एक example आपको दिया था। ठीक है, so you have to see when, at which point of time you will replace it। ठीक है, इसका भी एक प्रॉब्लम है आपको, उसमें मैं बताऊंगा आपको that you can find out when to replace a machine। टाइम जो है अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा उसको। ओके, विल अंडरस्टैंड नाइसली, राइट? ठीक है, तो बस यही है कि यहाँ पे ऑब्सोलेसेंस हो रहा है, देन यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि जब न्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर आप नया इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, एंड ओल्ड वन यू आर डिस्पोजिंग, तो उसका जो नेट इम्पैक्ट आपका कम है कि ज्यादा है, ये आपको देखना है। ठीक है, is what you have to see. So you will see all associated costs of the old machine, and you will now then place the associated cost of the new machine, और आपको कंपेयर करना पड़ेगा which is better. Okay, okay, चलिए, so any function aimed at restoring an item to its original or acceptable condition, ठीक है, ये है मेंटेनेंस का डेफिनेशन। any function aimed at restoring an item to its original or acceptable condition, okay, okay, or to keep it and retain its health as well as workability is known as maintenance। ठीक है, ये मैंने restoring an item either to original, original तो बनता नहीं है, राइट, और to acceptable condition। ठीक है, that is basically what is maintenance। बस अभी we'll finish objectives of maintenance and then we will move to the problems। ठीक है, सारी theory आपकी हो गई है यहाँ पे। now we have to do only the problems now। ठीक है, after this, so we'll do little bit of problems today, and on Sunday we'll complete the problems, easily we'll complete। on Sunday you can join at 12 p.m. okay, I think 2 hours will be sufficient for us, won't require more than that। okay, so 12 p.m. to 2 p.m. we'll do on Sunday। ठीक है, so this chapter, ओके सर। so this chapter will get completed। ठीक है, और जो प्रॉब्लम मैंने ये बताया था आपको, that what we are going to do is this Sunday
this chapter will get over, and next Friday we'll start with strategic management, last chapter. Okay, chapter 3, strategic management, last chapter we will start. So the second chapter which I have loaded, okay, please go through the videos. Okay, I'll give you a short introduction of second chapter, main parts which are required for the third chapter, that I'll give you on Friday. Okay, try to just go through the video once. Okay, you should be able to understand it. It's quite straightforward. Okay, any doubts you can always reach out to me. Right, so चलिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनेंस. ठीक है, ये सब जो पॉइंट वाले जो प्रॉब्लम मैंने बोला आपको, जो पॉइंट्स है, ये सब आप अच्छे से करके जाइए. ओके, एटलीस्ट 4 or 5 points just retain. Okay, objectives of maintenance: keep production facilities and other facilities in optimum working condition. Okay, ensure specified accuracy to products and timely delivery to customers. ठीक है, keep downtime at minimum to keep production cycle within the stipulated range. Okay, जितना प्रोडक्शन कितने रेंज में हमको रखना है, बेस्ड ऑन आवर पॉलिसी वी कैन कीप इट, एंड यू कैन ऑलवेज एडजस्ट इट बेस्ड ऑन योर सेल्स. ठीक है, मॉडिफाई मशीन टूल्स टू मीट ऑगमेंटेड नीड फॉर प्रोडक्शन. ऑगमेंटेड यानी ज्यादा. ठीक है, इफ यू नीड मोर प्रोडक्शन यू कैन मॉडिफाई मशीन टूल्स. ओके, improve productivity of existing machine and avoid sinking of additional capital. Okay, ठीक है, to keep maintenance cost at minimum. और ये है extend the useful life of plant and machinery without sacrificing performance. कोई भी 5 पॉइंट चुन लीजिए इसमें से, whichever you find easy. अपने वर्ड्स में आप लिख देना, that is objectives of maintenance. That's it. Okay. चलिए, so now we will start with the problems. The problems, as I said, are all statistical based. ठीक है, statistical problems है. तो but you if you do 2-3 times आपका हाथ बैठ जाएगा उसमें. Okay, do 2-3 times and you will understand. You see, I'm telling you one thing. Okay, in OMSM, whatever problems you have in study material, all problems of study material, just do 3 times each one of that. ठीक है, 3 बार आप पूरे प्रॉब्लम्स करके जाओ. ओके, और थियरी भी आप जितना कर सकते हो जस्ट डू. ओके, shorten and do, but don't leave it. You can shorten it, but don't leave it. So, पूरा स्टडी मटेरियल बेस्ड प्रिपरेशन आप करना है. प्रॉब्लम्स जो है 3 टाइम्स करके जाना है. इजीली यू विल गेट 60 तो मिल ही जाएंगे आप. ओके, चलिए, फर्स्ट इलस्ट्रेशन 1 नाउ. ओके, अ वर्कशॉप हैज 20 नंबर ऑफ आइडेंटिकल मशीन्स. ठीक है, तो क्या 20 सेम मशीन है. फेलियर पैटर्न ऑफ द मशीन इज गिवन बिलो. ठीक है, सो ये वर्कशॉप में वी हैव गॉट 20 मशीन्स. ठीक है, 20 मशीन्स है, और इसका फेलियर पैटर्न इन्होंने यहाँ पे दिया है. ओके, व्हाट इज फेलियर पैटर्न? ये है चांस दैट इट विल फेल. ठीक है, चांस दैट इट विल फेल. व्हाट यू बीन गिवन इज elapsed time of machinery, sorry, elapsed time after maintenance attention. ठीक है, इन मंथ्स. ओके, तो यानी जो मेंटेनेंस हम करते हैं तो इन मंथ्स, 1 मंथ, यानी इसका मतलब है एवरी 1 मंथ वो लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं. ओके, इट्स लाइक दे आर डूइंग सर्विसिंग और ओवरहॉलिंग एवरी 1 मंथ.
वो मतलब है elapsed time after maintenance and attention is 1 month। ठीक है, एक एक हर 1 महीने में कर रहे हैं तो फेलियर हो रहा है 0.20। फेलियर का प्रोबेबिलिटी इज 0.20, where every 2 months they are doing servicing, they have observed that it is 0.15। if every 3 months they are doing servicing, then the failure is 0.15। ठीक है, ऐसा मतलब है इसका। तो इतने इतने महीने का डेटा इन्होंने निकाला है। ओके, ठीक है। तो कुछ इट माइट नॉट लुक लॉजिकल, कुछ इसमें हमको वी हैव टू जस्ट ट्रीट इट स्टैटिस्टिकली। सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि ठीक है स्टैटिस्टिकली ये कैसा बनेगा। तो ये जो डेटा रहेगा ये बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स रहेगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगेगा ये 1 के लिए एक हर महीने मेंटेनेंस कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज मोर। यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 महीने में मेंटेन कर रहे हैं तो भी सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। ओके, ठीक है। यहाँ पे आप एवरी 2 months यू आर मेंटेनिंग, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज लेस देन दिस। ठीक है, तो ये जो डेटा आपको दिया गया है आपको वही डेटा को यू हैव टू ट्रीट। बट रियलिटी में क्या रहेगा, ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस रहेंगे। ठीक है, इन्होंने तो अपने को ऐसे रैंडम फिगर्स दिए। ओके, तो अदरवाइज ये सब रियल में ऑब्जर्वेशन जो रिकॉर्ड किए वो चीज रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आफ्टर 1 month प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है 20। ठीक है, और ये इसका इतना इतना प्रोबेबिलिटी है। तो इसका ये मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर में 20 मशीन्स है। करेक्ट, वो 20 मशीन्स। तो अगर मैं 20 मशीन्स में देखूं, ठीक है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है 0.2 है। ओके, और इसमें 0.15 ऐसा है। ठीक है, तो 20 मशीन्स में कितने कितने मशीन्स आ रहे हैं मैं देखूं अगर। ओके, सो आई विल जस्ट डू इज इक्वल टू 20 इंटू ये प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये सेम चीज मैं सारे लाइंस के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे भी। ओके, 20 इंटू ये। तो यानी ये मशीन्स को मैंने बस ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रोबेबिलिटी जो है ना ऑलवेज ये टोटल आपको 1 आएगा कभी भी। ओके, इस टोटल विल बी 1। ओके, या 100% अगर परसेंट में है तो, ये डेसिमल में है तो 1। राइट, तो दिस इज सो हियर ऑफ 20 मशीन्स, यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि 4 मशीन्स 20 में से 4 मशीन जो है वो हम अगर एवरी मंथ मेंटेनेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो भी फेल हो जा रहे हैं। ओके, आई एम डूइंग मेंटेनेंस एवरी मंथ, स्टिल 4 मशीन फेल हो जा रहे हैं। ठीक है, आई एम डूइंग 2 मंथ मेंटेनेंस, मंथ्स इन 2 मंथ्स, 3 मशीन फेल हो जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा मतलब इसका बनता है ये। ठीक है, अभी ओके, ठीक है। सो अभी चलिए एक तो यहाँ पे मैं आपको वापस लेके आऊंगा। ठीक है, इस पॉइंट पे हम आगे करेंगे। पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। राइट, इस सॉल्यूशन में एक्सपेक्टेड टाइम बिफोर फेलियर निकाला गया है। ओके, फर्स्ट व्हाट दे हैव डन इज एक्सपेक्टेड टाइम बिफोर फेलियर। तो मैं इसका लॉजिक आपको समझाऊंगा ऊपर, तो मैं ये दिखा के फिर लेके जाना चाहता हूँ, सो यू विल अंडरस्टैंड मोर व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। ओके, सो एक्सपेक्टेड टाइम बिफोर फेलियर, ठीक है, इसमें क्या किया गया है, 0.2 इज फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 0.15 सेकेंड प्रोबेबिलिटी है ना, और पॉइंट, तो ये है, ये 1 2 3 4 5 6 जो है, दीज आर द मंथ्स गिवन। ठीक है, ओके, सो दीज आर योर मंथ्स। राइट, 1 2 3 4 5 6, ये है प्रोबेबिलिटी। ओके, व्हाट दे हैव डन यहाँ पे। ओके, मैं आपको किस चीज का लॉजिक समझा रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 1 इंटू 0.2 प्लस 2 इंटू 0.15 प्लस 3 इंटू दिस प्लस 4 इंटू ये, ऐसा करके सब किए उन्होंने। ठीक है, ओके, व्हेन दे हैव डन दिस, ओके,
यहाँ पे you see, ठीक है, 0.2 into 1 to 0.2. So they have got expected time before failure of one machine. One machine लिखा नहीं है, but it is one machine. ठीक है. So they are getting total time before failure. So when you do this 0.2 into 1 plus 0.15 into 2, you add करेंगे तो you will get 3.5 months. ठीक है. तो आंसर आता है कि ये सब 1 2 3 4 ये सब मंथ्स है ना. सो व्हाट आंसर यू आर गेटिंग इज 3.5 मंथ्स. अब सवाल ये उठता है, ठीक है, यहाँ तक, इसके आगे हम करेंगे बाद में. ठीक है, तो यहाँ पे भी पहली बात ये है, मैं नीचे आपको इसलिए लेके आया यहाँ, तो जस्ट टू सो व्हाट इज द लॉजिक कि इसको ऐसा हम ऐड करेंगे अगर, तो प्रोबेबिलिटी को और मंथ्स को और सबको ऐड करेंगे. सो यू आर गेटिंग एक्सपेक्टेड टाइम बिफोर फेलियर. फेलियर से पहले कितना टाइम, यानी कितना टाइम चलेगा वो फिर फेल होगा, वो एक मशीन का मिल रहा है. वो कैसे मिल रहा है वो मैं समझा रहा हूँ. ठीक है, ये मैं समझा रहा हूँ. So here now this is what we are trying to understand. So now here you understood that elapsed time after maintenance attention in 1 month is 1 2 3 4 5 6. This is probability of failure. If I take 20 machines which is given in the problem, that means this is 4 3 2 this I get. Okay, so 4 machines is failing after 1 month. Okay, 3 machines are failing after 2 months. Okay, so this is what we are getting. Now say ये 20 machines के जगह, okay, if I say if I put one machine, ठीक है, तो इसका टोटल कितना आ गया आपका 20. करेक्ट. टोटल ऑफ दिस इज 20 है ना. दिस टोटल विल बी 20, राइट. सो अगर मैं, ठीक है, इफ आई वेर टू से एक मशीन का अगर मैं जानना चाहता हूँ, नॉट 20 मशीन बट वन मशीन, व्हाट डिड वी डू, 20 इंटू 0.2, करेक्ट, 20 इंटू 0.15. ठीक है. अगर मैं एक मशीन का जानना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, आई वॉन्ट टू सी ऑफ फॉर वन मशीन, मैं बोलूंगा 1 इंटू 0.2, करेक्ट, 1 इंटू 0.15. ठीक है. सो 1 इंटू ये सब करूंगा तो आंसर क्या यही आएगा. ठीक है. सो इफ आई, अगर जो मैंने आपको 20 मशीन्स का डेटा बताया है, ओके, दैट if I want to find out for one machine, so I will get this total is one machine. ठीक है. तो हर मशीन, एक मशीन का प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऐसा आएगा, 0.2 ऑफ अ मशीन, 0.2 ऑफ अ मशीन फेल्स इन 1 month. ठीक है. 1 month आफ्टर सर्विसिंग इट फेल्स. ठीक है. और 0.15 ऑफ अ मशीन फेल्स आफ्टर 2 months. ठीक है. तो अगर ये यहाँ पे ये जो 0.2 है, मान लीजिए 0.2 के जगह जस्ट कंसिडर, ओके, अगर 1 रहता, सपोज अगर 1 यहाँ पे 1 रहता, 1 मशीन, ओके, सो 1 मशीन आफ्टर 1 month इट इज गेटिंग फेल्ड. ठीक है. तो बेसिकली हम कितने महीने के बाद वो फेल हो रहा है वो कैसा फाइंड कर रहे हैं, 1 into 1. ठीक है. अगर ये 2 मशीन रहता, ठीक है, इफ 2 मशीन्स रहता, तो हाउ मच विल बी द टाइम elapsed. ठीक है. हाउ मच विल बी टाइम elapsed आफ्टर मेंटेनेंस अटेंशन. व्हाट आई वुड डू, यहाँ पे 2 into 1 में करता. क्यों, क्योंकि एक मशीन जो फेल होगा, ठीक है, वो 1 month के बाद फेल होगा. 2 मशीन जो फेल होंगे 2 महीने के बाद होंगे, राइट. ये कंसिडर करते हो कि एक मशीन फेल होगा फिर दूसरा मशीन आप चलाओगे. यानी इसमें ये हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये पूरे सेटअप में एक भी मशीन जब तक चल रहा है तब तक आपके सिस्टम को हम ब्रेक डाउन नहीं बोलेंगे. ओके, सिस्टम इज नॉट ब्रोकन डाउन टिल ऑल मशीन स्टॉप. ठीक है. तो इसीलिए, ओके, तो इसीलिए यहाँ पे जो है, अगर अब नाउ आई दिस इज 0.2 ऑफ अ मशीन. ठीक है. तो इसका कितना मंथ से अगर मैं पीरियड ये देखूं, ओके, इफ आई वांट टू सी द पीरियड, पीरियड विल बी कितना मंथ. ठीक है. 1 मशीन रहता तो कितना रहता, 1 into 1 1, करेक्ट. 2 मशीन रहते तो
2 into 1, 2 months would be the elapsed time. ठीक है, for one machine 1 month, second machine के लिए 1 more month, correct? So here this would be 0.2 into 1. ठीक है, और second one will be 0.15 into 2. ठीक है, second one will be this into 2. ठीक है, तो ये मेरे को क्या मिल रहा है, ये आई एम गेटिंग मंथ्स. ठीक है, ये मंथ्स मिलते जा रहे हैं मेरे को यहाँ. ओके, व्हेन आई एम मल्टीप्लाइंग दिस बाय दिस, ये जो आप देख सक रहे हैं यहाँ पे 0.2 by 1, आई एम गेटिंग मंथ्स. ठीक है, दिस इज हाउ. ठीक है, इसका पहले वाले का कितना मंथ है? सो कहने में हम बोल रहे हैं 0.2 part of a machine will fail after 0.2 months. Then 0.15 part of a machine will fail after this month. लेकिन जब तक मशीन पूरा फेल नहीं होगा तब तक हम फेल नहीं बोलेंगे उसको, करेक्ट? ओनली व्हेन इट फेल्स, पूरा फेल हो जाए तभी हम उसको फेल, कोई भी स्ट्रक्चर को. ठीक है, अब हार्ट है आपका, योर हार्ट. ठीक है, सो हार्ट अटैक का बोलते हैं जब उसमें 4 वेल्व्स होते हैं हार्ट में, करेक्ट? सो जब व्हेन ऑल 4 गेट्स ब्लॉक्ड तभी आप हार्ट अटैक बोलते हैं, राइट? आता है जब 3 भी ब्लॉक होता है तो एक तो चलते रहता है, राइट? सो हियर लाइक दैट, यहाँ पे ये सारा जब फेल होगा ना तब आपका एक मशीन पूरी तरह फेल होगा, मानेंगे हम. दैट इज आपको सम ऑफ दीज होगा. ठीक है, ये समझ में आया क्या लॉजिक? Yes, sir. Okay, understood everyone? Because based on this logic we are going to do 2-3 problems. It's important for you to understand this logic here. Okay, so this is basically, it starts like this, which is why I started telling you from 20 machines. Okay, for 20 machines you will know that after 1 month there were 4 machines which failed. Okay, then you had 3 machines which failed after 2 months. इस तरह से 20 machines का निकला आपका. तो वैसे ही आप 1 machine का भी निकाल सकते हैं. तो वही हमने किया, 1 machine का हमने निकाले, तो ये आया हमारा 1 into 0.2 ऐसा करके, ये सारे हमारे ये ही आ गए हमारे. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है, ओके, इट इज द सेम एज पार्ट ऑफ द मशीन विच विल फेल. ये सब जो है ना पार्ट ऑफ मशीन विच विल फेल. ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पे देख रहे हैं इज इक्वल टू दिस. ठीक है, ये इक्वल टू दिस. तो उन्होंने जो मल्टीप्लाई किया है दिस इंटू दिस नहीं है वो, एक्चुअली इट इज दिस इंटू दिस. ठीक है, बट बिकॉज बोथ फिगर्स आर सेम वी आर सीइंग इट एज दैट. ठीक है, तो यहाँ पे जो उन्होंने मल्टीप्लाई किया है इट इज 0.02 इंटू 1 प्लस दिस इंटू 2. ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इट इज सेम एज दिस 2 वैल्यूज, करेक्ट? इसीलिए हमको ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के साथ मल्टीप्लाई किया, ऐसा नहीं है. ओके, तो यहाँ पे जो है हमने ये मशीन का पार्ट है. ठीक है, एक मशीन कितने महीने के बाद फेल होगा ये बोल रहे हैं, आप मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को, सो यू आर गोइंग टू गेट मंथ्स. ठीक है, अब ये सारे मशीन्स के पार्ट्स इतने इतने महीने में फेल होते जाएंगे. ठीक है, यहाँ फेल होते जाएंगे. तो लास्ट वाला फेल होगा तब मशीन फेल होगा. सो नाउ टोटल फॉर मशीन, इफ यू वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी मंथ्स में एक मशीन फेल होगा, तो इसको आपको ऐड करना पड़ेगा. दैट कम्स टू 3.1. ओके, तो ये लॉजिक है इसका कि why this has been done. what you can see here 0.21 ये करके 3.5 मंथ्स जो आया ना इस तरह से आया. तो एक मशीन का नाम है, ओके, 3.5 मंथ्स इज एक्सपेक्टेड टाइम बिफोर फेलियर. ठीक है, एक मशीन विल गो ऑन टिल इट्स लास्ट पार्ट फेल्स, इट विल बी 3.5 मंथ्स. ओके, अब लेकिन हमको जो पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन,
If you see what they have asked us, okay, they said compute the yearly cost of servicing. ठीक है, here they are asking yearly cost है ना of servicing broken down machines. तो इसीलिए हम सबसे पहले ओके हम yearly cost निकालेंगे. First thing what we know now is 3.5 जो है, एक मशीन फेल होता है in 3.5 months, correct? One machine fails in 3.5 months. ठीक है, राइट? तो अब हमको तो ईयरली कॉस्ट हमको कैसा निकलेगा, पहले कितना ब्रेकडाउन हो रहा है एक साल में वो हमको निकालना है. हाउ मच ब्रेकडाउन इज देयर इन 1 year, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. दिस इज 12 months, 3 ये मंथ्स है. ओके, 3.5 months, वन ब्रेकडाउन. ओके, सो इन 12 months हाउ मच ब्रेकडाउन, कितने ब्रेकडाउन होंगे? इट विल बी 12 into 1 upon 3.5, करेक्ट? इस तरह से हो जाता है 12/3.5. ठीक है, दैट इज द नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स. एक्चुअली वो ऐसा नहीं आएगा, 12/3.5 3.42 आता है. ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स, क्योंकि हमको एक ब्रेकडाउन का कॉस्ट दिया है उन्होंने, इसलिए वी नीड, और एनुअल पूछ रहा है इसलिए हमने 3.5 को एनुअल में कन्वर्ट किया. इफ कन्वर्टेड 3.5 into एनुअल, ठीक है, तो वी गॉट 3.42 ब्रेकडाउन. नाउ यू हैव एक ब्रेकडाउन का कॉस्ट उन्होंने दिया है आपको 150 रुपीज. इट कॉस्ट 150 टू अटेंड टू अ फील्ड मशीन. ठीक है, यहाँ पे 150 आपको दिया है उन्होंने ऑलरेडी. सो फॉर वन मशीन कैन वी से, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, so यहाँ पे नेक्स्ट थिंग इज देयरफॉर हाँ, नंबर ऑफ रिपेयर पर मशीन पर एनम, यानी एक साल का हमने निकाले एक मशीन के लिए, करेक्ट? ओके, नंबर ऑफ, ये और नहीं ऑफ होना चाहिए, नंबर ऑफ रिपेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ रिपेयर्स पर मशीन पर एनम, एक मशीन का एक साल का निकाले हमने, जो हमको 12/35 मिला था, करेक्ट? यू गॉट 12/35 ईयर, है ना? ये यहाँ पे 12/35 मैंने बताया था आपको. फाइन, तो ये एक, ये है नंबर ऑफ ब्रेकडाउन फॉर वन मशीन इन 1 year. ठीक है, सो इसका कॉस्ट कितना आएगा? एक ब्रेकडाउन का कॉस्ट है 20 रुपीज. वन ब्रेकडाउन का कॉस्ट इज 20 रुपीज, करेक्ट? दैट सॉरी 150 रुपीज. ऊपर हमने देखा था ना 150. तो इतने ब्रेकडाउन है, 12/35 इज द नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, 3 पॉइंट समथिंग. ठीक है, इसका कितना दाम आएगा? ये इंटू 150 आएगा, करेक्ट? दिस इज व्हाट यू हैव टू पे. हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, यू कैन आस्क मी. ओके, ठीक है, so I hope you have understood till here. Yes, sir. So 12/35 is the number of breakdowns for one machine in 1 year. So number of breakdowns into cost per breakdown. So for one machine we are getting cost of breakdowns. ठीक है, लेकिन अभी तो हमारे पास है 20 machines, so multiply by 20, you will get this. ठीक है, so this is how this had to be solved. ठीक है, understood? नहीं समझा? Yes, sir. Sir, understood. ओके, ठीक है, ओके. दैट यू वांट मी टू एक्सप्लेन? ये जो ये पार्ट समझ गया आप लोगों को? दिस पार्ट यू हैव अंडरस्टूड?
how why we did 1 into 20 plus 2 into 15, ठीक है, to get elapsed time after maintenance for one machine, ठीक है, time before breakdown for one machine. ये समझ गया, ये वाला टेबल समझ गया. ये टेबल हम यूज करेंगे आगे और दो तीन प्रॉब्लम्स. सेम थिंग. ओके. Okay, sir. चलिए, so then okay, second problem. A public transport system is experiencing the following number of breakdowns for months. ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मान लीजिए बस है, इट इज एक्सपीरियंसिंग दिस ब्रेकडाउन. टेबल दिए हैं फॉर मंथ्स ओवर द पास्ट 2 years. ओके, सो दे हैव रिकॉर्डेड इट. ठीक है, सो उनका रिकॉर्ड वो बता रहा है पास्ट 2 years का. फ्लीट ऑफ व्हीकल्स का मतलब है ग्रुप ऑफ व्हीकल्स. ठीक है, 10 व्हीकल्स, 15 व्हीकल्स जो भी होंगे, उनके ग्रुप ऑफ व्हीकल्स का. दिस इज द ब्रेकडाउन इंफॉर्मेशन विच दे हैव मेंटेन्ड. ओके, चलिए, सो ये दिस इज द टेबल. ठीक है, ये नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स एंड 0 1 2 3 4. ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स दिस अकर्ड. ठीक है, मंथ्स दिए हैं, टोटल रहेगा 2 years, पास्ट 2 years दिए हैं उन्होंने. ठीक है, ये मंथ्स का टोटल है 2 years. ओके, टोटल ऑफ दिस इज 2 years. ठीक है, तो अब ये बोलना है चाहता है हमको. ओके, फॉर 2 साल का रीडिंग है उनका. दे आर शोइंग अस 2 years रीडिंग. ओके, नाउ फॉर 2 months. ठीक है, ये 2 साल में से फॉर 2 months कोई भी ब्रेकडाउन ऑब्जर्व नहीं किया गया. ओके, देन फॉर अ पीरियड ऑफ 8 months ऐसे थे जब एक ब्रेकडाउन हुआ महीने में. 8 months दे ऑब्जर्व. देन फॉर 10 months दे ऑब्जर्व 2 breakdowns. ठीक है, देन फॉर 3 months दे ऑब्जर्व 3 breakdowns. और एक में तो 1 month में ही उन्होंने 4 ब्रेकडाउन ऑब्जर्व कर ली. ठीक है, तो ये उनका डेटा दिया है. ठीक है, so what they are asking now is, चलिए, so each breakdown cost the firm an average of 200. One breakdown 2800. okay, okay, each breakdown का cost is 2800, right. और एक चीज बताया, फॉर अ कॉस्ट ऑफ 1500 पर मंथ. ओके, फॉर कॉस्ट ऑफ 1500 per month प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैन बी कैरिड आउट. ठीक है, सो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का खर्चा है 1500 टू लिमिट द ब्रेकडाउन्स टू एन एवरेज ऑफ 1 per month. ठीक है, इसमें बस क्या फायदा होगा आपको इन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, व्हाट विल बी द बेनिफिट यू विल हैव, यू कैन लिमिट इट टू 1 per month, ब्रेकडाउन टू 1 per month. ठीक है, तो विच पॉलिसी इज मोर सुटेबल. ओके, सो अभी ये देखते हैं हम. ठीक है, सो यहाँ पे ऑल डेटा इज पर मंथ. ठीक है, ये 1 per month पूछ रहा है. ओके, तो इसीलिए पर मंथ डेटा हम फाइंड आउट करेंगे. ओके, यहाँ पे भी डेटा इज इन मंथ्स. ठीक है, सो हम क्या फाइंड करेंगे. ओके, डेटा इन मंथ्स. ठीक है, सो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन इन 1 month दैट वी विल फाइंड. ठीक है, तो ना नंबर ऑफ ब्रेकडाउन यहाँ पे दिया है ये. ठीक है, ये ले लीजिए, मंथ्स इज बिलो. ठीक है, तो ये इसको हम इसमें डालेंगे यहाँ पे. ओके, ये टेबल हमको बनाना है इसमें, ये प्रॉब्लम में. ओके, सो वेरी सिंपल लॉजिक इज सेम एज द फर्स्ट प्रॉब्लम. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, ओके, सो हियर वो जो टेबल में हमको दिया हुआ था ना,
नंबर ऑफ ब्रेक डाउन इज दिस, ठीक है, 0 1 2 3 4, और उसके बाजू में मंथ्स जो दिए थे उसको यहाँ डाल दिए बस, ठीक है। जस्ट यूज द प्रॉब्लम में जो दिया है वही डाला है, ठीक है। व्हेन यू टोटल दिस मंथ्स इट वाज 24, करेक्ट। 24 मंथ्स का दैट गिवन अस डेटा, ओके। सो नाउ क्या करेंगे कि यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। वी वांट टू फाइंड आउट 1 मंथ में कितना ब्रेक डाउन हो रहा है, ओके। वी वांट टू फाइंड आउट हाउ मच ब्रेक डाउन इज इन 1 मंथ। तो इसको जो है, ये 24 मंथ्स को 1 मंथ में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ऊपर हमने क्या किए थे, हमने मशीन को, वन मशीन लिए थे, उसके पार्ट लिए थे, करेक्ट। वी टुक वन मशीन and all the probability where its parts of the machine, okay. And here what we are doing, we want 1 month, okay, and we will take all these will be parts of a month. तो यानी 24 को 1 मंथ अगर हमको करना है तो बेसिकली क्या करेंगे, आप अपॉन 24 करेंगे, करेक्ट, ओके। तो ये सारी चीजों को अपॉन 24 करना है हमको, देन वी विल गेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला कॉलम जो है, ठीक है। फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट डू 2/24, 8/24, 10/24, 3/24, 1/24, ठीक है। ये करना पड़ेगा हमको इसके लिए, ओके। इन अदर वर्ड्स क्या बोले हमने कि फॉर 24 मंथ्स, ठीक है, 24 मंथ्स में, ठीक है, ये अगर 1 है तो 2 मंथ्स में कितना होगा, ओके। तो दैट्स वाई इज इक्वल्स टू इंटू 2/24 हो जाएगा। ये अगर 1 है, राइट, 24 मंथ्स में 24 मंथ्स में अगर ये 2 है, ठीक है, तो 1 में कितना, ओके। सो 1 into 2/24, सो इन शॉर्ट इसको पूरा जो है ना, बस आपको डिवाइड द एंटायर रो बाय 24, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइड में, ओके। आई राइट हियर 2/24, ठीक है। ये आ गया 833, देखिए सेम इज द सेम थिंग आई एम ड्रैगिंग डाउन, ठीक है, फॉर्मूला। अब देखिए दिस होल थिंग, दिस एंड दिस इज सेम, दिस एंड दिस इज सेम, ठीक है, ये दोनों सेम है। ये जो है इसको जस्ट टेक 24/24 विल बी 1, ठीक है, ठीक है। चलिए, ओके, तो दिस इज हाउ वी गॉट दिस, ये। तो अब ये क्या मिल गया मुझे, दिस इज, इसका टोटल है 1, तो ये सेम एज दिस है। ये 24 मंथ्स के लिए रेट है, ये 1 मंथ के लिए रेट है, ओके। दिस इज फॉर 1 मंथ। सो अभी, ठीक है, ये है हमारा, दिस इज अवर टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स, ठीक है। ये है हमारा टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स, ठीक है। ये पूरा 12 महीने का, 12 महीने का टोटल डेटा क्या था, ये, करेक्ट। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन फॉर 12 मंथ्स, ठीक है। अगर अभी मुझे, अगर ये किया सपोज, ठीक है, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ अ मंथ, ठीक है। दिस फ्रैक्शन ऑफ अ मंथ इनटू ब्रेकडाउन में करूंगा, इफ आई डू दिस फ्रैक्शन ऑफ अ मंथ इनटू ब्रेकडाउन, सो आई विल गेट ब्रेकडाउन फॉर दिस फ्रैक्शन ऑफ अ मंथ, ठीक है। और वैसे ही इफ आई डू दिस फ्रैक्शन ऑफ अ मंथ इनटू दिस ब्रेकडाउन, this fraction of a month into this breakdown, this fraction of a month into this breakdown, and I add them all, ठीक है। if I add them all, then I will get total breakdown for 1 month, ठीक है। सेम पहले प्रॉब्लम जैसे ही है, पहले प्रॉब्लम में ये आपके मशीन्स थे, these were parts of machines, ठीक है। यहाँ पे आपका पार्ट्स ऑफ मशीन थे, और यहाँ पे आपका पीरियड था, मंथ, ठीक है। मंथ्स यहाँ पे थे पहले वाले प्रॉब्लम में, ओके। अगर मैं दिखाऊं आपको फिर से, सी दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम, हियर यू हैड मंथ्स, ठीक है, और यहाँ पे हमारा पार्ट्स ऑफ मशीन है, यहाँ पे हमने जो निकाले थे,
ठीक है। सो पार्ट्स ऑफ मशीन इनटू मंथ किए हमने, ओके। ये पूरा हमने यहाँ पे एक मशीन इनटू दिस मंथ ये किए पूरा, और जब सबको ऐड किए तो हमको क्या मिल गया, वन मशीन कितने दिन में फेल होगा ये मिल गया। ये जो वन तो वन मशीन में ये कितने दिन में फेल हुआ ये मिल गया, ठीक है, कितने दिन में फेल होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में यहाँ पे बस क्या है आपका, यहाँ पे मंथ नहीं है, यहाँ पे फेलियर्स दिया हुआ है, ब्रेकडाउन्स, ठीक है। सो नाउ इफ आई डू दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ठीक है। ये अगर किया so I will what I will get is breakdown for 1 month, ठीक है, समझ में आया। जी सर। ओके, अंडरस्टूड राइट। चलिए, ठीक है, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग प्लीज आस्क मी, ओके। चलिए, सो दिस इज हाउ वी गॉट दिस। सो नाउ ये जो प्रॉब्लम है बस वही, ये जो लाइन यहाँ पे वही किया गया है सेम, ओके। सो इफ आई विल डू दिस हियर, ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल्स टू दिस इनटू 0, ओके, सेम थिंग आई एम ड्रैगिंग डाउन, ठीक है। You can just see it is same as this is 0, this is 0.33, okay, this is 834, ठीक है, it's 833, they have written 834 here, that's okay, okay, and this is 375, this is 168, it should have been 167, so they have just put one more here, one less here, that's fine, that's just a part of a fraction, okay, so that's okay। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया, ये जो मिला ना, इस ये जो हमने निकाले, दिस इज नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स वी गॉट नाउ, टोटल ऑफ दिस इज 1.710, ठीक है। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग दैट हाउ वी कैलकुलेटेड number of breakdowns, so now what we have to, this is number of breakdowns per month, correct? So this was 1 month data, 1 month, so number of breakdowns for 1 month, ठीक है। सो चलिए, सो नाउ व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रेकडाउन पर मंथ, 1.710 which we calculated here, ठीक है, into 2800 is given in the problem, here, okay, ठीक है, each breakdown cost is 2800, and now we know in a month we have what, how much, 1.710, so 1.710 into 2800 will be the breakdown cost, 4788, okay. Now we will compare with preventive maintenance. So preventive maintenance, they said that it will limit to 1 month, okay, one breakdown per month, it will limit to one breakdown per month. So this will become, this was 1.710, it will become 1 now, correct, this will become 1, right, one breakdown for 1 month. So this is what it is written here, okay. So here, so each breakdown is this, for a cost of 1,500 per month. Preventive maintenance can be carried out to limit breakdowns to average of 1 per month, correct? Average of 1 per month. Okay. So and preventive maintenance cost is given as 1,500 here. Okay, here. So what will be the total cost of preventive maintenance for 1 month? You will have to take 1,500 and to that add one breakdown cost.
correct? One breakdown cost is 2,800. It's 2,800 plus 1,500. That will be the preventive maintenance cost. Why? For 1 month, it is 1,500 is the preventive maintenance cost, but it will have one breakdown also. One breakdown cost is 2,800. So add the two. Okay. So preventive maintenance cost is, average cost of one breakdown is 2,800. Maintenance is 1,500. Add the two. Total is 4,300. Now compare 4,300 with 4,788. Whichever is lower is more beneficial to you. So preventive maintenance is more beneficial here. Okay. Thus preventive maintenance is suitable for the firm. Okay. This is one very short problem. So we can just continue, finish this. Okay. Another 5 minutes, I think. 5 to 10 minutes. Okay. This is one problem I'll finish. Okay. So you are all okay if I stretch for another 15-20 minutes or no? नहीं सर छोड़ दीजिए ये एक प्रॉब्लम करा दूं ये वाला. अच्छा ठीक है, करा दीजिए करा ये एक कर देते हैं. ठीक है, मैं सोच रहा था कि बाकी थ्रेड ओके को करेंगे. ये एक छोटा प्रॉब्लम है बहुत. ओके, so this company manufactures TV sets. Okay, manufactures TV sets and carries out picture tube testing for 2000 hours. ठीक है, जब टीवी बनाते हैं तो टीवी का पिक्चर ट्यूब टेस्टिंग करते हैं. ओके, उसको बस चला के छोड़ देते हैं. They just switch it on and they see how long the TV runs before failing. That's how picture tube testing is done. Same thing is done for bikes. Okay, so they just fill the tank, certain number of liters of petrol, whatever, and then the bike runs till failure. Okay, and not that, then they also carry out tests where the bike just runs and runs and runs. They keep on adding fuel. It runs till it fails. So they come to know how much kilometers is the life of the bike. Okay. Similarly here, picture tube testing is carried on for TV. Okay. So carries out picture tube testing for 2000 hours. Total 2000 hours. They have tested. A sample of 1,100 tubes were put through this quality test. Okay, during which 2 tubes failed. यहाँ पे क्या दिया गया? Picture tube testing of 2000 hours they have done. Okay, one is 2000 hours picture tube testing. Right, sample of 100 tubes. 100 tubes यानी 100 TV होगी. Right, 100 tubes is 100 TV. Was put through this quality test and 2 tubes failed. Okay, 100 tubes means two tubes failed. Okay. चलिए, ये हमको टेस्ट डेटा दे. अभी तक जो हमने देखा ना, दिस इज अवर टेस्ट डेटा. दिस इज अवर टेस्ट डेटा. ओके, नाउ वी आर हैविंग रियल डेटा आफ्टर दिस. इफ द एवरेज यूसेज, okay, so now real data. Now if the average usage of TV by the customer is 4 hours per day, customers use TV 4 hours per day and 10,000 TV sets were sold. Okay, then in 1 year, how many tubes expected to fail were expected to fail, and what is the mean time between failures? Mean time between failures means what is the time between 2 failures? Okay, one TV will run till the next failure. How much is the time? That is mean time. Okay, time between 2 failures. चलिए, so ये और क्या? Then in 1 year, how many tubes were expected to fail? So ये red में जो बताया है, this is our question. What I have shown you in red is our question. Okay,
So usage of TV by customer is 4 hours per day, 10,000 TV sets were sold. Then in 1 year, so we need annual data here, okay? How many tubes were expected to fail? What is the mean time between failures? So we'll see this. First, we will have to form some data out of the test, and then we will apply it here. So in the tests, what they have given us, 2000 hours testing of 100 tubes. Okay, picture tube testing of 2000 hours. Okay, and sample of 100 tubes was put through this test. Okay, ठीक है, तो ये जो है, okay, so एक टीवी का पिक्चर ट्यूब टेस्टिंग फॉर 2000 आवर्स बोला है ना, यानी एक ट्यूब को 2000 आवर्स चलाया उन्होंने, वो मतलब है carries out the picture tube testing for 200 hours. That is for 1 TV. Okay, so for 100 TV it will be 2000 into 100. ठीक है, so which is why total test time is 100 tubes into 2000. 1 TV is 2000 hours, 100 TV is 2 lakh ट्यूब आवर्स. ठीक है, ट्यूब आवर्स का मतलब कुछ नहीं है, एक टीवी का 2000 आवर्स है. So all TVs together, that is 100 TVs, what is the total time? That total time is 2 lakh hours. That they are saying tube hours. Okay. Okay. 2 lakh hours is the total hours. Now we were told that 2 tubes have failed. ठीक है, 2 ट्यूब फेल हो गए हैं, तो इसीलिए जो टोटल टेस्ट टाइम है, total test time we cannot take as 2 lakh hours. Why? Because 2 tubes have failed. जो फेल हुए हैं वो 2000 आवर्स नहीं चले होंगे ना, जो फेल हो गए that would not have run for 2000 hours. That you have to adjust here. ठीक है, how that is adjusted is lost hours. Okay, so 2 tubes, what will be the lost hour? 1 tube is 2000 hours. ठीक है, 1 tube is 2000 hours. So 2 tubes के लिए 2 into 2000 होगा, right? Lost hours, okay, should be 2 into 2000. But now we do not know that the tubes have failed at the beginning or at the end or at the middle, or so in that 2000 hours line, where has it failed? It could have failed at 20 hours, it could have failed at 200 hours, it could have failed at 500 hours, isn't it? That we do not know. So we take average hours. ठीक है, we take average hours. 2 into 2000, इसको एवरेज करने के लिए अपॉन 2 करते हैं, यानी हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं 1000 आवर्स के बाद वो फेल हो रहे हैं, दैट यू आर अज्यूमिंग. ओके, सो दिस कम्स टू 2000 आवर्स. दिस इज द लॉस्ट आवर्स. ठीक है, सो 2000 आवर्स को वी हैव टू एडजस्ट इन योर 2 लाख जो यहाँ पे हमने निकाला था. हियर वी फाउंड 2 लाख, राइट? ये जो 2 लाख ट्यूब आवर्स है, तो ये 2 लाख में से हमको 2000 निकालना है. तो तब हम बोल रहे हैं कि टेस्ट कितने घंटों का हुआ. टेस्ट डिड नॉट हैपन फॉर 2 लाख आवर्स, टेस्ट हैपेंड फॉर 2 लाख माइनस 2000 आवर्स. ओके, तो इसीलिए 2 लाख माइनस 2000 कितना हो गया? 1,98,000. ठीक है, 1,98,000 ट्यूब आवर्स ऑफ टेस्टिंग हुआ है. ओके, ये हमको मिल गया टेस्ट का डेटा. ओके, चलिए, तो हमको तो ये टेस्ट से हमने ये निकाल लिया, टोटल ट्यूब आवर्स निकाले, टोटल आवर्स निकाल लिए. टेस्ट कितने का हुआ था? 1,98,000 ट्यूब आवर्स का. ओके, नाउ इन द रियल डेटा गिवन नाउ, ठीक है, क्या दिया है उन्होंने? ये है प्रॉब्लम का डेटा है हमारे. ठीक है, ड्यूरिंग 365 डेज अ ईयर, ठीक है, टोटल कितना चलेगा? ओके, so now first what we are finding out is, ठीक है, how many failures will happen, because now we know that for 1,98,000 hours, ठीक है, ये 1,98,2 hours का अगर मैंने टेस्टिंग किया है तो 2 फेलियर हो रहे हैं, ये मेरे को मालूम है, राइट? So now using this data I will try to find for this the data actually given. 1 year दिया है उन्होंने, राइट? So 365 days.
4 hours a day दिया था, राइट, एंड 10,000 टीवी दिया था. 10,000 टीवी मीन्स 10,000 ट्यूब, राइट. So 4 hours, one TV is running per day. So for a year, how much it will run? 4 into 365, correct? 4 into 365, 1 year. Now, how much 10,000 TVs will run into 10,000? Okay. So 365 into 4 into 10,000. These are the total running, okay, of all the TVs. ठीक है. तो टोटल रनिंग मिल गया. ओके, तो अब हम कैसे निकाल सकते हैं इसको? हम सीधा सीधा प्रोपोर्शन करेंगे. ओके, okay, so what we are going to do here, ठीक है, ये जो ऊपर वाला लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ठीक है, तो हाउ मच डिड ऑल टीवीज रन, ठीक है, वो कैसे कैसे बनाएंगे हम? 365 इंटू 4, ठीक है, इंटू 10,000. ओके, 365 इंटू 4 इंटू 10,000. ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज 4 टीवीज, sorry, 1 TV is running for 4 hours for 365 days. ठीक है, so total hours 1 TV is running is 365 into 4 multiply by 10,000 TVs और picture tubes. तो ये है पूरा टाइम जो ये चला है. अब मैं ये बोलूंगा यहाँ पे 1,98,000 when it runs there are 2 failures. Okay, when 1,98,000 it runs there are 2 failures. ठीक है, when it runs this much, how much will be the failures? How much will be the failure? ठीक है, तो what will it be? ये होगा आपका ठीक है, this into 2 divided by 198. ठीक है, राइट, यानी 2 by 198 हो रहा है, so that is this 2 by 198 and यहाँ पे ये जो है this is same as this. ठीक है, this इस तरह से you got this calculation. So this calculation is giving you what? यहाँ पे 2 failures हुए थे, राइट, एंड सो यहाँ पे इतने आवर्स में कितने फेलियर्स होंगे? ओके, दैट इज 147.47. वॉट एवर बी द डेसिमल, उस तरफ दूसरे तरफ में राउंड ऑफ कीजिए. ओके, इवन इफ इट इज 147.2, ठीक है, राउंड ऑफ द अदर साइड. ठीक है, 0.5 से कम छोड़ना नहीं है यहाँ पे से, राइट. तो दिस इज 148 ट्यूब्स हमारे आ रहे हैं. ठीक है, तो 148 ट्यूब्स का फेलियर हो सकता है. इन 2000 जो दिया है उन्होंने, 10,000 टीवी, 10,000 टीवी, इतने ट्यूब्स, इतने टीवीज फेल हो सकते हैं. ये हमने पहला क्वेश्चन निकाल दिया. ठीक है, सेकेंड दे हैव आस्क्ड इज मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स. ठीक है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स यानी 2 फेलियर के बीच में कितना टाइम? एक फेलियर 1,98,000, करेक्ट. 1,98,000 इज 2 फेलियर्स, करेक्ट. तो एक फेलियर का कितना होगा? अपॉन 2, राइट. तो 1,98,000 अपॉन 2 विल बी मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स. ठीक है, दैट इज 99,000 ट्यूब आवर्स. ओके, इज 99,000 ट्यूब आवर्स. ओके, यहाँ पे आ गया आपका 99,000 ट्यूब आवर्स. ठीक है, पर फेलियर. so ये है मीन टाइम बिटवीन फेलियर, ये आपका निकल गया है. ओके, तो बस इसको जो है एनुअल डेटा में हमको बस बताना है. ओके, ओके, वी हैव टू शो दिस. इसको इसी इसी चीज को 99,000 इज द आंसर. ठीक है, इसको हम बस बता रहे हैं कि एनुअल डेटा में ये ट्यूब आवर्स है ना, हमको ट्यूब आवर्स नहीं, हमको ट्यूब्स में आंसर देंगे. ओके, विल गिव आंसर इन नंबर ऑफ टीवीज. ठीक है,
what they have asked. ठीक है, ये ठीक है, this is how many tubes were expected to fail and what is the mean time between failures for these tubes. ठीक है, ट्यूब्स में पूछा है उन्होंने, ठीक है, ट्यूब आवर्स में नहीं पूछा है, तो दिस इज वाई हम क्या करेंगे, विल गिव द आंसर इन ट्यूब्स, बस इतना ही। ट्यूब आवर्स मिल गया, ट्यूब निकालना कोई बड़ी बात नहीं है अभी, ठीक है, ये प्रोपोर्शन देखेंगे अभी, ठीक है। तो यार फॉर एक ट्यूब कितने घंटे चलता है, वन ट्यूब runs for 4 hours per day, 4 into 365 per year, okay, 4 into 365 is per year, right? ठीक है, तो वन ट्यूब का आपको मिल गया 4 into 365 आवर्स, ओके। तो 99,000 जो आपके पास ऑलरेडी है, 99,000 ट्यूब आवर्स जो है, इसका कितना ट्यूब है ये निकल जाएगा इस, ओके। वन ट्यूब इज फॉर दिस मेनी ट्यूब आवर्स, तो 99,000 ट्यूब आवर्स इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी ट्यूब्स, 99,000 into 1 upon 4 upon 365, that is it will be equals to 99,000 upon 4 into 365. Okay, 99,000 upon 4 into 365. Okay, So 67.8082. 67 8082. correct, ठीक है, 67.8082 आएगा। This will be Yes, sir. 4 into 365, yeah, 1460, so is equals to 99,000 upon 10, ठीक है, 67.8082। तो ये है आपका, तो ये जो डेटा हमारे पास था ना, बस इसको हमने ट्यूब में कन्वर्ट कर दिया, ट्यूब आवर्स में था, हमने इसको ट्यूब में कन्वर्ट करके आंसर दिए बस, ठीक है, इतना ट्यूब्स पर ईयर, ठीक है, ये यहाँ पे पर ईयर ही है ना, ये सब वी आर टेकिंग पर ईयर, ये पर ईयर, ठीक है, तो इतना ट्यूब्स पर ईयर इज द फेलियर, ये आंसर रहेगा इसका, ओके। तो दैट्स व्हाट, ये प्रॉब्लम है हमारा, फाइन। चलिए, तो 3 प्रॉब्लम हो गए हमारे, तो सॉरी थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड हो गया, तो बस थोड़े संडे को भी हमको कवर करना है कुछ, सो आई जस्ट फिनिश्ड दिस, ठीक है। सो वी जस्ट हैव टू डू प्रॉब्लम्स नाउ ऑन संडे, ओके, 12 से स्टार्ट करेंगे, विल जस्ट फिनिश ऑफ द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स, ओके। एनी डाउट so far, or you can ask on Sunday also? No, sir, not any doubt. Okay then, okay, fine then. See you all on Sunday. Good night. Thank you, sir. Good night, sir.